Hello, Banter Bros. What's up? I know Mohit का भी फोटो डालता. Mohit will join in a bit. He wanted to do it on 9:30. मेरे को जल्दी finish करना है. I have had a very long day. I am pretty cool. Gunaran Vex is here. Thank you, Vex, for joining in. Uh, I would prefer if you call me something else. You can call me Varun Ank or something. Gunar Ank यार तुम लोगों ने तुम साले वो I have to control. I have been asked not to swear as much, so you can call me a gunner unk or something. Like, but hello, bro. What's up? Unk chalo is nice. Yes. Yo, कैसे हो यश भाई? कैसे हो यार? हम लोग वेट कर रहे का हमारा सुपर चैट होगा. मैं सुना यश भाई गिव्स आउट super chats in dollars. Just kidding. Yeah, defective bhai. Seriously, we would be happy even if we don't get super chats. We just want the support and love. एकदम बढ़िया. आप कैसे हो यार? एकदम एकदम ओके ओके. हाँ हाँ. फाइनली गुड लाइटिंग. हाँ, आज मैंने मेरा रिंग चालू कर दिया like before. I पड़ा साइड में. I didn't feel like turning on the room lights, so I thought that would work. अरे लव इज ऑलवेज देयर फॉर यू. बस लव ही चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए. Really, honestly, we never did it for money, or to make it. We just wanted to come out, have some good time with people who think like us, and hoping that they enjoy our banter. So yeah, money agar milta hai, good. But I don't think any of us who started this channel initially wanted it for the money or did it for the money. Look good like natural sunlight. Thanks, man. Same. Banter is fun. Yeah, absolutely यार. मतलब तुम लोग क्यों ही आते हो यार? मतलब क्या है? एनालिसिस देखना है, आप डिफेक्टिव भाई के उसमें जाओ. लाइक आपके चैनल पे लोग अच्छा, लाइक यू गिव अमेजिंग एनालिसिस. You go to Piyush's channel, they all do great football. Go to the channel. I need some money. यार तो भी बच्चा है, पढ़ाई पे ध्यान दे यार. जब तेरा करियर स्टार्ट हो जाएगा, you will also think like us. तो अभी तू पैसे का इतना मत सोच. जब मैं तेरी उम्र में था, मैं तो एंजॉय कर रहा था. आई वाज एंजॉयिंग माय कॉलेज लाइफ. आई वाज एंजॉयिंग. हाँ, मतलब पॉकेट मनी और सब चाहिए रहती थी. बट फिर आई डोंट थिंक आई वाज क्रेजीली आफ्टर मनी. वेक्स पढ़ ले, मनी आ जाएंगे. एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट. बिल्कुल सही पकड़े हो. टारगेट ऑडियंस. एग्जैक्टली. यो मोहित, What's up, तेरी guys? लाइट भी ठीक कर ले भाई. हाँ, यस. यो मोहित की द बियर्ड मस्त लग रही है यार. आज मैं नीचे उसके साथ बैठा था. ही वाज हैविंग डिनर, मैन. ग्रेट बियर्ड डन, मैन. Yeah, I have to give props to the guy who did it this time. You're looking pretty nice. Who is this सस्ता मो साला? अभी 1 लाख का लैपटॉप लिया है इसने. वही साला एक नंबर का. AFC discussion should start with reviewing Arteta's press conference. Gabriel Odegaard Gyökeres कंपनी की खबर है. हाँ, so I read the outtakes of the Arteta का press conference पे, and we'll start with that. Let me just get just to अभी comments आ रहे हैं. We'll just do it. You study, I study, we all study. एक ही घर में कॉल पे आते हो, एक दूसरे को ही बोलते हो. we are fixing it. I think it's matter of few months now. You might see me and Mohit do live shows and other types of shows together on one screen. We have already prepped up the new place where we're gonna do it, but it's not gonna be in this house. I think we mentioned that we are moving, and when we move out, उधर हम लोगों ने एक spot ढूंढना है where me and Mohit will be face to face, and you'll see us on one screen. Mohit now looks 10 years younger. Yes, he does. So, thank you, man. रेफरी को लेकर वो वापस एक पर्सनल सवाल पूछना. हाँ, we are bringing Mr. We call him Ali, so we'll bring him back. Ali is Alistair Ross.
So we call him Ali. So he just texted us back. He's asking us for dates. So we are figuring out our schedule and his schedule. I think more or less December first week is what we're thinking. So I think we will be able to bring him back soon. Yeah. You guys will like, Hopefully. and we are thinking to bring, I guess, do something different because we already know his life story now. जो उसने बताया था हमको, and he's done all his special moments in our previous video. And we asked him, obviously, the David Coot वाला भी situation हमने उसको उस time पे पूछ लिया था, which was the biggest issue at that time when David Coot was caught with the Liverpool thing, and then for the drugs that he was doing and everything. So we've already covered that. So there is nothing more interesting in terms of controversial decisions पे हम बात कर सकते हैं उनके साथ. So we are figuring out what sort of video, but he is very eager to get back. He wants to get back on Football Banter X, and we are very happy that he liked the content when he came first time around. Yeah. United की spelling गलत है. It's United, not untied. Sorry, I'll fix that. जल्दबाजी में मैंने बना दिया था. I'll fix that right now. All right. Anyway, Yeah. let's get into the meat of things. Yes, let's do that. मोहित स्टार्ट कर यार, मैं जरा स्पिक फिक्स कर रहा हूँ. One video with Michael Oliver. I would love to. Michael- I would love to speak. मतलब whenever if I get the chance, I would love to speak to Michael Oliver. I want to ask him कितना पैसा तेरे को सिटी ने दिया है, सच बता दे. I mean, who wouldn't like? किसको नहीं मजा आएगा उससे बात करने का? But unfortunately, they can't. Even if we could get him, I'm sure he wouldn't be able to say much because he's still working. वो अपना वो typical देगा, बोले every decision that I give is gonna be criticized or gonna be controversial. So बोले कि it doesn't matter like what we the guys think. ड्रॉ दे दो भगवान, दे दे बस भगवान. बस वरुण भाई, पीएल क्लब्स सब आज वोट किए फॉर नेक्स्ट स्क्वाड कॉस्ट रेशियो. अब कोई 7 या 8 या 9 प्लेयर के विंडो में नहीं खरीदेगा. व्हाट से जरूरत भी नहीं है ऑनेस्टली 7-8 प्लेयर्स. सो चार्ल्स भाई, if you remember, Arsene Wenger used to say, when you bring in more than 4 or 5 players, now you are changing the entire team. So you are completely ruining the chemistry in your squad, in your team, and also in your back room. Imagine you have a tight. Acha, यहाँ पे सब like I recently, after Mohit has been telling me for ages, I recently completed Ted Lasso. So you saw, and I know Ted Lasso is not a good example to give a real life situation what happens in the back room, but I'm sure you can understand what sort of chemistry those people have. You become friends. You recently saw Andy Robertson's interview where he broke down about Jota's incident. So you can imagine how close these people get, and then suddenly you bring in 8-9 new players inside that squad room. तुम लोग क्या expect करो, क्या होने वाला? अरे नौ नए बंदे आ गए, and then you like be प्यार सब लोगों से मिलजुल के रहो, मस्ती करो. That's not gonna happen, man. That अच्छा है यार, 5 से 6 प्लेयर लाओ मैक्स, आई एम सेइंग, और यू कैन ब्रिंग इन 3-4 प्लेयर्स. तुम्हारा स्क्वाड धीरे-धीरे बिल्ड करो. यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ऑलिवर बोलेगा जितना सिटी ने दिए है उससे ज्यादा तो दे बता दूंगा. Yeah, so yeah, Mohit, let's get into. We've done all the chats and we have 6 Yeah. people watching us. So let's start with the Robertson interview made most football fans emotional. Yes, it's like losing a friend, man. We never see what's happening behind the scenes with footballers. Maybe you see some. हम लोग इंडिया में रहते हैं तो वी प्रॉब्ली डोंट रीड दोस पेज 3 न्यूज़ जैसा हम लोग को यहाँ आती है अबाउट बॉलीवुड स्टार्स. अब इंग्लैंड में मी एंड मोहित हैव बीन देयर. So footballers की lives is like that. It's like a page 3 news क्या कर रहे हैं. But you never know what's happening in their personal lives, how they close they are. And when you read something like that and someone comes out and opens and tells you something like that, it makes you emotional. Definitely, any of such stories is gonna be, especially if you love the game, if you like the. I don't like. I've recently started hating Liverpool, but I genuinely do not unlike. Other than Mane, I have never really disliked any Liverpool fan. Liverpool Was fan Rob- or player, you mean? Oh, sorry, Liverpool player.
Liverpool player. Other than Mane, I have never disliked any other Liverpool player. What's Was a up? Long long time no time. see, no super chat. So, Arey yaar, अरे we are सर. last 2 weeks have been extremely busy. Whenever we think that it's an international break and we'll get to do more on the channel, we get extremely busy. Like I was traveling for work for the last Even I was 4 days, traveling. 4 days, and then we didn't get any time to actually upload anything. And We did not. then I did not get time. Then I decided उस time पे when no one was available, so I decided to do some videos on Banterverse. I did an entire series, एक final video बाकी, which I plan to do tomorrow daytime में. Hoping के I get some views during lunch time या something. Oh भाई कब होगा monetization on? It's gonna take a while. We are still 230 subs away from 1,000 and many watch time hours away to get monetized. As we will be in World Cup fever, who's your dark horses for this World Cup? For me, it's USA and Norway. It's in the US. Uh, mm, I'll have to see who else have qualified, but my personal favorites are England. Let's see. This time England's gonna be the dark horse. देखते हैं क्या होता है. yeah. Let's hope so. The dark Yes, let's horses go. in white jerseys. वरुण भाई वो कार रिपेयर वाला ये खत्म हो गया है मतलब इट्स जस्ट आई रियली लाइक्ड इट मतलब आई वांटेड समथिंग कैजुअल टू कीप माय माइंड calm and something with a good progression system. It has a great progression system and it touches one of my greatest hobbies. Hobbies मतलब one of my favorite topics that's cars. So I played that. Abhi I'm ending it. It was Bitter and Yash and even Solo who asked me to start a playthrough of GTA 5 since GTA 6 is coming out. They want me to play the just story mode hai GTA 5 ka. I have it on my PC. I have decided to start that series. I'll play only the walkthrough. उसमें कुछ नहीं करेंगे. We'll just do couple of mods. We'll put the car mods डालेंगे जिसमें we'll make the cars look the real life cars कर देंगे उनको. And we'll do some visual mods because I have a better PC. That game came out in like 13 years ago, so definitely I have a PC that can run some more 4K mods or something. तो उसको थोड़ा सा Hmm. हम visually अच्छा करके we'll play that game. USA gonna surprise, I think. Yes, it is home teams. Ram bhaiyo, अरे Anshuman bhai, how are you यार? Long Anshuman time, Bhai, long time. welcome back. We're following you on your holidays. Now Anshuman Bhai is back, and we are doing a United Talk episode this Sunday. So hopefully, चलो great. yeah, I'll see you So there. that will be before the United का game तो मंगलवार को है, so Okay, Tuesday को. So that Tuesday. let's it's Let's yeah. start with that Let's do that. actually. So people and I heard this when Lala spoke about it. That United fans are a little cringed that why is that match on Monday night for us Indians anyway. Yeah. Monday रात को क्यों है, like why does that happen to United? Other than us not getting to see the match on a weekday, I actually think it's good for the players because उनको ज़्यादा rest time मिलेगा. You have to realize that these guys, some of them travel a lot while coming back to their respective leagues, and some of them play way out in South America and wherever. So it's good. It's kind of good that they will get more rest time. Like take Liverpool for example. वो लोग पहला मैच खेल रहे हैं कल. All right. So and they all say that the early kickoff game is always like muddy and something or the other goes wrong. So I think I would rather take that game now. Like in the from the long term perspective, I think चलेगा. अगर मेरे को मंडे रात का गेम मिलता है तो it's okay. भाई तेरा आवाज बहुत कम आ रहा है. Is it just me or I think it could be just me. It could be you. Yeah, it could be. रोशी जितना डिलीजन स्पर्स फैन नहीं देखा हूँ. रोशी okay, sorry. Hello Varun bhai. Thank you Rana for finally fixing this and delusional mo. Of Delusional course mode मेरा क्यों तो भाई? work from home मैच देख के घर से ही करना है काम. चलो बढ़िया. That's great then. PL I wants us to explain UCL timings. Anjuman bhai, I'll join you for the watch along if you don't mind. थोड़ा मेरे को थोड़ा हमको support चाहिए. I'm sure. Anjuman has been great, Madhav. I think he would be open to that. I have a feeling that after Gabriel injury, Arsenal gonna do classic choking move. मैं honestly देखो बोलूँ कि it all depends on because we
got a lot of depth this season. Let's see how Nketiah does. If he उसने अच्छा खेला, he played very well in UCL. So I'm hoping if he does well, and let's hope Arteta starts him over Mosquera, because even though I like Mosquera, I want him to continue with the left right. And Nketiah is much more aggressive player. He's like Gabriel. So we need that calming effect of Saliba and then aggression of Gabriel, and Nketiah brings the aggression. While I think Mosquera is as calm as Saliba. So थोड़ा aggression होगा तो बढ़िया आएगा. And 9 8 likes is very. I agree. I agree. Hello, अरे प्रियांश भाई क्या हाल है यार? If you guys want to watch some great analysis on football, always go watch Priyash Bansal on with obviously Sardar ji Harry on Dugout Dost. Is there anything new in that? अच्छा तुम लोग बड़े भाई हो. Was up? Yours was up better. Thank you for the Discord का यार. मन में कहाँ चांद पर बैठे हो. I know कुछ एक मिनट. I'll reduce the intensity of this light man. बहुत ज़्यादा हो रही है I think. Anyways, Mohit, so continue on the United ka talk. I think this is much better. So let's continue on the United ka talk. Yeah. So I wanted to ask you now. You guys, I think more or less अब settle हो गया. I don't think, other than your defense, I don't see anything sort of going wrong for you right now. You have a steady keeper. Yeah. You have a very good attack, and with Embu coming in great goal scoring form. Cunha goal नहीं मार रहा है, but he's in good form as well. Yeah. While Sheshko injured हो गया, that I know about. ठीक है. बाकी you still have Xerxes who can play there. तुम लोग you have like messed around with someone playing up front other than Sheshko and Xerxes. So what do you think? Do you guys will now settle into अब तुम लोग के like other than the FA Cup that's gonna come in Jan? You only have Premier League games, and there's not going to be many international breaks coming up. So do you think now do you have a good chance to cement yourself as a top 6 team? Yeah, to be honest, like, I wasn't expecting us to be challenging for top 6, but to be honest, this league is so close this time. कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है. You are at 18 And points, right? With Spurs. we're at 18 points. Liverpool are below us, so that's a new. And I think we're showing good fighting spirit, but I don't still expect us to, come in the top 6. मैंने सीजन के स्टार्टिंग में ही बोला था, और अभी भी बोल रहा हूँ कि we might be in the top 10 but not in top 6. So मेरे हिसाब से we will do well, but well in comparison to last season. So not like great this season. I don't expect us to like pull out trees and finish top 6 anyway. But having said this, like Advait ne bola hai, mobile thoughts on Mbumo going for FCon. Bro, I'm not just worried about Mbumo. I'm also worried about this guy Mazarawi and Dalo. So our entire right side has fucked off during that tournament. तो वो क्या करते हैं? How do we manage that? And while I have been in favor of Ruben, he has done a few things uh, you know which I don't agree with. Like he hasn't rotated much this season. And but to be fair to him, I get it. Like you lose one game at United and you're the media turns on you. Like what has But happened to that's for United? Mohit. That's for all. I think That's good. that's true for all big teams. Considering Arsenal ने Sunderland के सामने draw किया, वो भी away. A team Sunderland team which is in a very good form, and I think people have been they're getting a lot of praise. हमने उनके सामने draw किया, last minute goal खाया. Yeah. And everyone thought that Arsenal is going to start choking. So I think that's true for all big teams, not just No. United. I think United fans start feeling थोड़ा सा ज़्यादा pressure of all because of the past few seasons क्या हो रहा है. तो probably ज़्यादा pressure आ रहा होगा. But I don't think it is कि भाई it's just you are being targeted. You accept it or not, but the pressure on United managers is always twofold. All right, because it's Manchester United. करते ही है वरुण टारगेट मतलब कुछ भी करते हैं like and
We've seen that with Eric Ten Hag. So Eric Ten Hag maybe deserved it because of his stupid answers, but I don't think Ruben Amorim को भी होता ही है, मतलब हर बार उसको पूछते जब हार रहे होते हैं, why isn't the system working, why isn't the system working, change something. अभी जीत रहे हैं तो फिर कोई कुछ बोल रहा है क्या? No one is saying anything. So मेरे This is हिसाब a से result we based. it is a result based affair, but I understand, like, but you can ask the people in the chat as well. I feel United ke managers are always targeted more, and it has been historically I did like not that. talk about कि United managers are under pressure. I said that the club. I was talking about the overall club ka situation. I think all top clubs are targeted. No, I think United has always been तो at the top. अजय तेरे को मैं एक एग्जांपल देता हूँ. We have been watching Pep Guardiola rip through this league in the Yeah, last decade. yeah. एवरी टाइम दैट ही इज डन वो जो जैन के बाद वो रन पे जाता है, इफ यू गो एंड वॉच, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, हमारे ग्रुप पे भी होता था तो उनके को भी पता है और मीडिया में भी होता था. एवरीवन वुड से फ्रॉडियोला बिकॉज फर्स्ट 3 महीने 4 महीने सिटी हैवंट परफॉर्म, तो फ्रॉडियोला ही इज बीन अटैक्ड कंप्लीटली. फिर वो आता No, है एंड सडनली जैन से वो रन पे जाता है एंड नोबडी टॉक्स अबाउट कि ही वाज कॉल्ड फ्रॉडियोला इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन. no, you're right. You're right. सबको होता है, लेकिन I feel this year, starting from last year, like, people started questioning his tactics already. Like, and to be honest, after how we started versus Arsenal, and then the games we played, I get it that we lost to Grimsby, we drew to a couple of teams, but wo moments se based hai yaar. Like, I mean, now you can't really blame Amorim for Bruno not taking the penalty properly. Right now, those are two games that we could have won. I'm thinking there were 3 to 4 games that we should have won. Oh, okay. In this season, where we threw away our leads or we did not score our penalties. I am thinking if we had fucking scored those penalties, taken our chances, we would be second or first right now. All right. And, but, leaving Arsenal aside, Arsenal wala match, to chalo, I get it. We were like against an elite defense. तो मैं वहाँ से कुछ expect नहीं कर रहा था. But I was No, expecting it is something no. from It was a other tough teams. match. Even though you guys were not performing, I know, but for an Arsenal fan to go to Manchester United as the first match, no matter Hmm. how shit United are or how bad of a form United are in, to go to Old Trafford, वो भी पहले match में ना, it is never an easy game. It is like perhaps the toughest fixture you can get. I would, for Arsenal, I would say. I think probably more tougher fixture would be to go to Anfield. Hmm. But I don't think there is it is as equally tough as Anfield. I still feel. तुम लोग खराब form. Ask any team. Like if you ask Hmm. Liverpool fans or ask Manchester City fans if they would like to play the first match at Old Trafford, तो वो लोग भी बोलेंगे नहीं यार, we would not want to No, start with that match. no one would, but ठीक है. I mean, props to you guys. You are doing well. And to be honest, I expect you to fucking win. अगर नहीं जीते तो मतलब लोगों से तो गाली खाओगे. मैं तो जूते मारूंगा तुम लोग को, तेरे को और केवी देख, को. मैं तो जाके केवी को गंजा करूंगा, मैं तो जाके दूसरे आर्सेनल फैंस को गंजा करूंगा अगर हम लोग नहीं जीते. मो भाई, योर थॉट्स ऑन, अच्छा यू गाइस, so after the stream ended on Roshi's channel yesterday, something transpired where me, KV and Roshi stayed back on the studio and we spoke a bit. So he was saying तुम लोग सच में गंजे होने वाले हो, and I said yes, if Arsenal win the league I'll go bald. And we decided कि अगर नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे. तो केवी said कि I will do a spice challenge. What So will you do? a spice challenge, Okay. something extremely spicy. He'll have those who are extremely spicy आते हैं ना, 2 times 3 times ramen लेगा live stream पे. He's gonna eat it and not drink water or any sort of ice cream or anything while he does that. So I said I'll join him as well. So look, Mm. watch out. So you guys are gonna have some enjoyment either way. If Arsenal wins the league, I'm gonna go bald. Roshi is gonna go bald. And if they don't win the league, me and I'm gonna join KV. So you might see us eating that spicy noodles and doing
some sort of shit while doing that. Anyways, let me take some comments. Mohit, Henkapia में aggression है Varun bhai. अरे Absolutely, that's why I इसका want to. इसका कमेंट था ना सिक्सर का, वो ले लेते हैं एक बार। वो लिख रहा था ना, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दे स्कोरिंग एवरीवेयर। यार हॉयलैंड एक का तो मिनट यार आई वाज एक मिनट, लेट मी जस्ट स्क्वाड कॉस्ट में सबसे आगे सिटी, देन यूनाइटेड, देन एएफसी लिव नेक एंड नेक, चेल्सी स्पर्स नेक एंड नेक। आपके क्लब रेवेन्यू का परसेंट स्पेंड होगा, बट एक्चुअली बिग क्लब्स एंड अदर क्लब्स को लेवल नहीं किया। ओके, आई हैव टू चेक ऑन इट। काला इज फिट फॉर टॉटनहम। ओ वाओ, नहीं अभी तो उसने बोला वो कल बताएगा। वी नीड टू नो व्हाट द मिडफील्ड इज एब्सोल्युटली इन शैम्बल्स। नहीं, आई स्टिल फील कि द मिडफील्ड नॉट वर्किंग इज मोर रिलेटेड टू द सिस्टम एंड हिम पिकिंग द प्लेयर्स, कैसे वो खिला रहा है उनको। while you have great good midfielders with you, Mount, Bruno Fernandes, you have थोड़ा बहुत कैसे मेरो इधर उधर काम कर सकता है, एंड उगारते कैन डू अ जॉब। देन यू हैव जिसके बारे में सब लोग बोल रहे थे अपना ये मेनू। सो वी हैव यू हैव अ लॉट ऑफ गुड मिडफील्डर्स। इट्स जस्ट दैट जब वो सिलेक्शन राइट बैठ जाएगी ना वो प्लेइंग, आई थिंक यू गाइस विल क्लिक। बट योर डिफेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, बिकॉज जितने भी तुमने गेम्स जीते ना, आई हैव सीन द टीम्स रिप यू अपार्ट। I have seen teams getting very good chances against you. कि they could have scored easily and you could have lost that match. तुम लोग जितना the how good you are going forward and attacking, you are equally bad when someone is attacking you. चल That was देखते what हैं, my लेकिन आई opinion डोंट थिंक यू शुड बी ओवर कॉन्फिडेंट। देखते हैं इतना। जिनका आई थिंक रेवेन्यू ज्यादा आई है उनका थिंक ही वैल्यू भी ज्यादा। और उनमें एब्सोल्युटली मोबाइल थॉट्स ऑन एम्बो गोइंग टू एफकॉन बिग मिस। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस ना, हमारा पूरा राइट साइड मिसिंग होगा। सो हमको हमाद ना खेल सकता है ना जाके वहां पे। अहमद भी जा रहा है एफकॉन। ओह डैम। Ahmad, Mazarawi, and Embumo, the You know, this is entire one of the right side. reasons. This is one of the reasons Arteta has stopped after Partey started going to AFCON. Na, he stopped picking very less African players because I of mean, that AFCON. is racist तो नहीं है ये चीज। Racist नहीं है, but bro, AFCOन every time Partey would go injured होके आता था और हमारा पूरा like what जो हम लोग एम कर रहे थे कि हम लोग आज 8th नहीं आएंगे, Partey खेलेगा तो टॉप 5 में आ जाएंगे। Like see the seasons that Partey has stayed fit. We have come second, whatever. मतलब 2 बार second आए whenever Partey has stayed fit. 3 times we have come second, you know, when he's been fit. So I would say So कि yeah, you. one second, one second. Let's actually start previewing the games so that But you एक know मिनट we मोहित, get. आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स, लेट मी गो थ्रू देम। अब आई थिंक माउंट एम्बोमो कुनिया वाला फ्रंट थ्री, एम्बोमो को कोरोना है, तो एफकॉन वालों को when the season started, uh, it was when 8, I didn't get this, what does that mean with? When the season started, eight was, I think, eighth का अच्छा, होगा। 8 was where I predicted. Okay, मैं बोला Yeah. is this some sort of okay, Dalot going to AFCON, what the fuck? Dalot भी AFCON जा रहा है? Where does Dalot play Diallo, for? हाँ, Diallo जा रहा है, Diallo, Ahmad जाएगा ना Diallo, भाई। okay, अमर Diallo, अच्छा। Yeah. अमाद जाएगा, डायलो कहीं नहीं जा रहा। एग्जैक्टली ही मैन डियालो सिक्सर सारे मो भाई डायलो नहीं अमाद। मो मो इज अ डायलो पगलू। देयर इज समथिंग अप विद मोस्ट माइक, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑफ। अच्छा I think it's fine. It's fine now. हाँ हाँ, डियालो की ओके। एनीवेज, दिस इज ऑल डियालो टॉक। क्रिस्टियानो इज हियर, कम ऑन टॉफीज, कम ऑन स्पर्स। अरे भाड़ में जा क्रिस्टियानो तो किसका लिवरपूल का किसका मैच है साला? Let me just check. लिवरपूल का उनके अपने आप से मैच है, ठीक है। I did not क्योंकि check. तो Liverpool is playing Nottingham Forest. I hope. तो कौन अभी Nottingham Forest का नया मैनेजर कौन है? Is it Sean Dyche? शॉन डाइश, यस। I hope Sean Dyche does क्या बोलते हैं, gives you guys a stunner at Anfield. वैसे भी स्टोन कोल्ड की तरह दिखता है। I'm gonna लिवरपूल play का उनके उनके after that अपने match. If अपने आप के Liverpool साथ ही मैच। drops points, I am gonna play the Stone Cold entrance music यहाँ पे on the show, hoping to not get a copyright. I'm backing United Amorim, but थोड़ा तो सोचो, a few months ago he said Pope cannot change him, and I think yesterday he said I have changed. यार तो one controversial thing that Amorim ended up saying and I did not agree to it, and I don't know if other people agree to this as well, but he said something about, and you know I don't really talk against Amorim, काफी कम करता हूँ मैं, मतलब I. Yeah. So what he said was, and this was not in the press conference. I haven't seen the press conference yet, but जो वो देता रहता है ना इंटरव्यू out, like you know he gives the most amount of interviews, उसमें उसने एक चीज ये बोली कि
the United Academy. If you see United's past, it is built on academy, right? He is obviously referring to 92. But there are other uses of academy as well. One of them is to make money. I was like, what? Hmm. How can you say this? And he's saying that, players have to accept that, not all of them are good enough to play for United. I was like, okay, that's upfront. But all players who are playing in our academy Hmm. have this, what do you say, intention of, somehow getting into the first team, right? First team Obviously, में वो उनका होगा, because some of them might be United fans, like that's why they joined the club at that age. So आप yeah. ये बोल के तो यार, this is not good. You should not be saying that. So that irked me a little. I hope he does not say that again. और कोई उसको question करे भाई तो क्या बोलना चाहता था वो चीज को लेकर. Maybe he's saying कि जो हमने past mistakes किए हैं of keeping the players for too long, Hmm. and not selling them on time. I agree with that. हम लोग ने बहुत सारे प्लेयर्स का ऐसा किया है. However, just stating that we can just sell players and make money and buy players that we need, I think that is a little too upfront, Amarim. You shouldn't say this. But yeah, Wait, since we're doing this, so we talked about United, Abhi. So let's talk about the match that's coming up. You guys have the match on Tuesday. we have Everton. Uh, you have Everton, Yeah, and they come to Old Trafford. yeah. So, what do you think of Everton? How are they? Let me just have a look at Everton. How have they been doing this season? Bring it on. In We terms can of, bring them on screen. Na? yeah, I'll do that. I'll do that. So we can So just talk about. Everton, okay season so far. I mean, NDI करके जो player है उनका वो अच्छा खेल रहा है. Hmm. ग्रीलिश अच्छा खेल रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट उसके अलावा आई हैव नॉट बीन watching Everton too much at the moment. यार एक मिनट. Can you see what Orbit is saying on WhatsApp? एक बार check कर ले. I just saw it. बाद में Orbit will do it. To अभी तू ऐसे भी नहीं है, तो we'll do it in a while. He's asking for something. हाँ, we'll do it after the stream. So Yeah. defender, मतलब मैं ये बोलूँगा कि they I am more scared about that game turning out to be a draw than they challenging us. और इतना हल्के में नहीं ले सकते एवर्टन को. They have churned out results at Old Trafford. Like they've turned our wins into draws or whatnot. ऐसा हुआ है. But उसके अलावा, like I am not too scared of Yeah, they're Everton. 13. Even though like the table is so skewed right now. Look at Yeah, from 13 to, I would say, let's say the fourth, let's say the fifth spot. They are just yeah, 3 points a gap. Many teams are on 18. There are almost 5 teams on 18. There is then rest of them are like 17, 16, 15. So 13 से लेके fifth spot तक, it is such a mess. And Rahul, I remember Mohit, Rahul told me कि yeah. वरुण, what I want from Liverpool is जो ये crowd है ना, अभी ये जो पूरा crowd बन गया है of these teams, Tottenham, Villa, United, Liverpool, Bournemouth, Crystal Palace, ये जो 18-16 points के बीच में जो crowd बन गया है, Liverpool needs to get out of this crowd. It They do, needs they do. to, जो जैसे 26 points पे आर्सेनल भाग गई है, so they are far away from this crowd. Even Manchester City are like 5 points ahead of them. So that they are ahead of it. So one game Arsenal losing will not put them in this crowd, but Liverpool losing, they go below of that. Mm. They need to go get a run of games just to get out of this crowd now. Come They on will, Spurs. they एक will. मिनट, But बहुत I, comments I, आ गए. I feel के Hmm. Liverpool, I Guys, I'll think take now comments. will. Sorry. Uh, Liverpool now I feel will move on, but we'll get to Liverpool. Everton के सामने hmm, मैच देखते हैं पहले. So yeah. I feel it's Yeah, gonna be. जोलो चिप खाना एक ही बहुत है. हमने किया हुआ, वी हैव डन दैट. आई ट्रस्ट मी, द नूडल्स आर मच मच स्केरियर, बिकॉज जोलो चिप तुम एक बार खाते हो एंड देन उसके बाद इट्स लाइक एक बार में यू आर डन, एंड देन यू गेट दैट, वो तुमको 10 होता है, मतलब यू डन विद दैट, यू विल गेट दैट स्पाइस जो एक बार आ गया है, बट यू कीप ईटिंग दैट नूडल्स ना, तो इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अप, और वो प्रोलॉन्ग, जब तक वो खत्म नहीं होता, यू हैव टू कीप ऑन ईटिंग दैट शिट. इसके लिए वी आर गोइंग विद दैट नूडल्स, ramen or noodles, whatever you want to call it. So my team will lose, and I'll see my favorite 79-year-old eating spice nice. Spicy nice, yes.
You will. Mohit, sorry. So Everton. Everton. So I feel it's gonna be a win. We should not struggle against them so much. Zyada injuries bhi nahi hai. I think we might see Lisandro back for a few minutes in this game, which I'm very excited for. He was the one who was driving us forward last season before he got injured. So he is mercurial. I hope he stays fit. And yeah, a lot of expectations from him this season. Hopefully, we get there. And I'm not really too irked about Benjamin Sheshko being injured. ठीक है, it's not a very serious injury. He should be back before Christmas. उसके आज एजेंट ने भी बोला तो it's all good. And yeah, so I think I should see this as an easy win. I hope we don't make it difficult for ourselves. And home पे हम लोग अच्छा खेल रहे हैं. Let's see. वरुण भाई एंड नॉर्थ लैंड प्रीव्यू तो करो या 1L इन 32 प्रीमियर लीग गेम्स टू देम. इतना क्या डिस्कस करना ऐसे वन साइड मैचेस. ठीक है. We should have called Roshi for this. नहीं रोशी के आई डिड गाइस गो वॉच रोशी स्ट्रीम इफ यू वांट टू वॉच मी विद अ स्पर्स फैन. देयर वाज केवी भी आया हुआ था वहां पे. आई डिड नॉट वांट टू कॉल हिम इज बिकॉज ही रोशी के साथ ना नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम ही सपोर्ट्स 3 टीम्स. उसकी फेवरेट टीम इज बार्सिलोना सो ही इज मच मोर वेल वर्स्ड एंड मच मोर पैशनेट अबाउट बार्सिलोना रादर देन स्पर्स. ही अंडरस्टैंड्स स्पर्स क्या है. यू नो he understands कि Spurs are the banter club. Yes, they won the champion Europa League last season, but he understands कि overall in their history they are a banter club at the most, So उसके लिए ना like he's very practical about it. So I wanted to just speak on the match. And you know what, Mohit, anything else if you like? United Everton, I would say कि United should start this run of games with a bang. Uh, Even though Everton is not too far off from you. Only thing is, if you can stop them scoring goals, I think you are more than capable enough of winning this match. Yeah, so Sanchit, I'd like to take this comment. Minimum 3 wins we United must have. यार back to back तो नहीं आएंगे. We have Crystal Palace बीच में. Crystal Palace is a bogey team Crystal for Palace is any gonna be tough. Yeah, very it's gonna very be tough. tough. All right. But yeah, like let's hope for the best. I will definitely be United does going. well in tough matches, so I think that I don't believe that that's too far off. SF No, also hardly picked players who used to play go for. Actually, bro, matlab it's crazy. My hot take is Arsenal 0 dash. I think he meant 1 Spurs or no zero. He went is zero because okay. I think I Hmm. don't know what he's doing, but ठीक है. Arsenal. I don't know. Something defective, but acha, okay. Acha, he did Zero want to zero say बोल 0-0. Okay, he wrote it twice. That's why. अपना तो होता रहता है. मुझे पता है ये लोडू यहाँ भी कुछ बकचोदी करेगा. लास्ट ईयर भी हारे थे फॉरेस्ट थे एनफील्ड पे पर उस टाइम पे इट वाज Nuno. So I do. That's completely changed now. Last year, be okay. Yo FBX back with PL. Absolutely solid team. That Pickford is a pain in the ass on his day. Absolutely. Defender bhi acha hai. I am here. Amorim said today in press conference that he is looking for player in academy as well. But he did also say that in past academy players have taken it for granted and they played for that they played for United. Yeah. That's I think that's what he meant. Mohit also mentioned it. I am not typing. Michael, I am on bed rest. Okay. Orbit, take care, bhai. Kya ho gaya, Orbit? With Lisandro Martinez coming back, we will see improvement. Do you still trust in the quality of Lisandro Martinez? क्या Amorim Lisandro Butcher को DM में try करेगा? He can Yeah, play nahi, DM. By the so way, he no, can play DM. he can play DM. He has played in Ajax or DM. I know that, but I don't think so. Lisandro Martinez has the pace to play there. You essentially want your DM to do to do a lot of running, and especially coming back from such a serious injury, I don't know if Lisandro is up to it. So मेरे को लगता नहीं है कि DM तो खेलेगा because that particular position is gonna involve a lot of running, especially if you're playing out, alongside Bruno Fernandes, because Bruno Fernandes might not be doing that much running. So maybe not the right fit in the balance of things. Maybe I don't know, but you never know. उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अमरिम के दिमाग में.
And to be honest, usually Amorim likes to keep things simple. इतना experiment नहीं कर रहा है, except for once when Ahmad को उसने left पे खिलाया था, when quite simply could just play him on the right and just go ahead with it. पर पता नहीं वो करता तो है ऐसी बकचोदी, but let's see क्या होता है. L ball runner रोशी का knowledge I would say is not L. He is so excitable ना कि उसके rants में उसका knowledge ना थोड़ा घुस जाता, मतलब वो दब जाता है. कभी-कभी उसके मैंने कुछ टेक सुने हैं which were very good, but overall मतलब obviously he is sort of or he tries to rage bait you more. So that is the main thing. हराम बॉल जोलो चिप नथिंग स्पेशल, अपने यहाँ असम भूत जोलकिया करके होता है ब्रो. सो I have a very high tolerance for spice. Mohit knows that, and I have done all sorts of challenges. So first thing that I do when I travel anywhere in the world is I go and try the most spiciest thing they have. इंडिया में भी करता हूँ. I recently went to, हम लोग जब दुबई हम लोग ट्रिप पे थे मैं और मोहित, तो I went to this place called Dave's Hot Chicken, and I tried their उनका उनके पास गोस्ट पेपर वाला भी था मोहित. नॉट गोस्ट पेपर, सॉरी. गोस्ट पेपर से एक और स्पाइसी है, दैट्स कॉल्ड कैरोलिना रीपर. उनके पास Right. कैरोलिना रीपर भी था. आई डिडंट, बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर एंड वी वर आउट देयर शॉपिंग एंड एवरीथिंग. तो मैंने वो कैरोलिना रीपर ट्राई, आई ट्राइड देयर एक्स, उनका जो उसके एक लेवल नीचे था, आई ट्राइड इट. इट वाज स्पाइसी बट इट वाज ऑल फाइन. आई उसको खाने के बाद लगा मे बी आई शुड हैव ट्राइड द कैरोलिना रीपर. Probably it would not have affected me that much. And bhoot jolokia is one of my favorite spices. Whenever I go, I read ki this is isme humne bhoot jolokia dala. I always go and try it. I love it. Minimum 3 wins for United. Arteta, Nasser, Mo bhai, do you think we can win all 5 games next? Thinks I've already answered that. Nahi. It's going to be very difficult. Yeah, exactly. Bhoot jolokia is the spiciest chili that grows naturally. Carolina Reaper is not a natural Growing pepper. It spice. was basically it is an hybrid created by a person in the US. But it is like crazy spicy. Please, everyone, please like the stream and subscribe. 800 karao jaldi. Absolutely on the channel after a long time. Oh, कैसा है Super Karan? He does come more or less. आता है Banter bus पे तो आता रहता है when I do streams. This is a question only for you, Mobai. Is this the last season for Salah? Yeah, last season should be the last. Last season should have been the last season for Salah. बट फैंस के प्रेशर में आके लिवरपूल के बोर्ड ने उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट. एंड या लुक एट वेयर ही इज नाउ. आई मीन आई थिंक ये लोग थोड़ा पिघल गए. वो बोलते हैं ना, वो क्या है, जाकिर हुसैन बोलता है ना कि मैं पिघल गया. ऑलराइट, तो बस ये लोग भी पिघल गए और दे दिया, टू बी ऑनेस्ट. और मेरे को लगता है वो उनके प्रेशर में आके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया. आई डोंट थिंक दे वुड हैव गिवन हिम अ कॉन्ट्रैक्ट. फैंस के प्रेशर में आके उनने दिया है कॉन्ट्रैक्ट. एंड आई फील बैड बिकॉज ये मैंने यूनाइटेड को करते देखा है. आई नेवर थॉट दैट लिवरपूल वुड डू दैट, लाइक बिकॉज दे हैव गुड ओनर्स, दे हैव स्मार्ट ओनर्स. और हम लोग, मैं और वरुण राहुल को बोलते थे कि यार तुम लोग अपने ओनर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हो यार. they have gotten you a Champions League, they have gotten you a Premier League. All right, you Two Premier cannot League. blame two Premier They were Leagues. on their way. They were on their way to win the second Premier League as well. In जब in हमने बात करी this थी. in this one team domination, league, you have gotten probably the two of the three league titles. All right. Yep. So that is crazy. I think you should have just trusted him. And if they were not giving a contract to Salah, I think they were right not to give him a contract. Now मुझे look तो at पता है भाई, ये असम का स्पेशल. एब्सोल्युटली. आल्सो आई विल लीव यू गाइस, माय स्ट्रीम इज अबाउट टू स्टार्ट. बाय. सो थैंक यू सो मच प्रियांश. Guys, thank like, you for share, joining, subscribe. If man. you haven't 1K करवा दो. Absolutely यार. I know we screw up with our algorithm a lot, but today I see we have a lot of people watching. 13 people watching. Thank you so That's much, great. man. Yeah. Thank you so much, guys. Yeah. What's up, Varun? Hope you are missing the Tikha Mumbai missile. Yeah. So this is my brother. Me and my Mohit ka Chirag is our brother-in-law, and hope you are missing the Tikha. Absolutely. Me and him. He used to. So मैं रहता था, तो he used to come. Used to work से सीधा मेरे वहाँ आते थे. He used to bring missile pav. Amazing, मतलब so fucking spicy, मतलब मजा आती.
आई स्पाइस इज द स्पाइसीएस्ट पेपर। ठीक है यार, वो बंदी पता नहीं क्या है, तुम लोग उसको जाके वो वर्क करती रहती है और सब लोग जाके देखते रहते हैं। एवरीवन वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट। थैंक यू सो मच चिराग यार, थैंक यू सो मच मैन। थैंक यू चिराग। सिक्सर, कभी रहीम द ड्रीम स्टर्लिंग का नाम सुना है? आई डोंट नो। Oh yeah, baby. सेम More लॉर्ड। some loss. Like if after you have answered Salah's question, don't you apply the same logic to Bruno? Different positions, yeah. Different positions. I think Salah's position requires a lot of running and up and down. And they had a chance of selling him for big money as well. You're right. It could have been the same for Bruno. But Bruno, in the position that he is in, I don't think he requires to run that much as Salah does, because he needs to do up and downs on the right channels here and there. The way Liverpool play football, they want their right winger to come back and defend together. And Salah को देख लो यार, वो नहीं कर पाता है, or maybe he's told not to do that probably because of his age. So that is why I was saying, because Liverpool traditionally since Klopp have been playing high octane football, and you would want all fresh players to be in your team, and I don't think Salah fits the bill. But that's me. That's why they bought Anyways, Frimpong. Let's see. we'll move on to the next man. I think United. मोहित prediction दे दे तू Everton का. I think it's gonna be 2-0. We'll get a clean sheet. I don't think he will keep a clean sheet. I'll give a 2-1 victory. I think that is more likely to United. More generous, you're वरुण saying. भाई, ये कैलन रीपर, स्कॉर्पियन रीपर और सब आफ्टर मार्केटिंग गिमिक है. आफ्टर यू नेवर टेस्ट द फ्लेवर ऑफ द मीट, यू जस्ट ओवरवेलम द स्पाइस, मे बी फन. यार ये जो, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, इवन विद भूत मिर्ची, आई टेल यू, you cannot have. So when I was in Assam, that was long time ago, so we had a cook there who told us like how bhoot mirch is actually used by the locals. What they do is, अगर वो कुछ बना रहे हैं, ग्रेवी या दाल या कुछ भी बना रहे होंगे, they take the pepper, they just dip it and they take it out. They never leave it inside. They dip it just to make it a little bit hotter. So that's the whole point. You cannot have these spice. So जो ये like you said, ये marketing gimmicks हैं where no one can have these peppers every day. It will just fuck up your system entirely. So so like you Yeah. say, it's just fun, not savory. I am damn sure, man. I think maybe I must have tried Carolina Reaper sometime. I don't remember on the top of my head. Uh, they definitely are not very good to taste. Like they are not वो जो खट्टा और वो सब जो आना चाहिए ना, that doesn't come out from that. That just, they just want to kill you off. So you're right, absolutely. That's what they're for. I think upcoming games are gonna be the real test, because against these mid-table we struggle to win. Absolutely, United struggles against the mid-table clubs. They don't do well. They do pretty surprisingly well against good teams. You see how they played against Arsenal. सिटी वाला गेम छोड़ देते हैं अपने, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब सिटी और तुम्हारा अभी पता नहीं क्या चल रहा है. देन यू सी हाउ दे प्लेड अगेंस्ट, आई थिंक स्पर्स के सामने भी तुम अच्छा खेले थे, राइट? Yeah, we played well against Spurs. You वही played well against Spurs. You played well उनका against Chelsea. You played well. You played decently well against Liverpool. Forget about the chances that Liverpool had. But when you got the chance on the break, you had many chances. जैसे मैं बोलता हूँ ना कि Liverpool were unlucky to not win or draw that match, because they hit the bar a lot of times. There were Hmm. plenty of moments for United also to finish off that match with more goals. Hmm. So that we have to think. then दोनों साइड का देखना पड़ेगा वो मैच में. How's Rahul? Rahul Yeah. is doing well. मैं- But Rahul will be back soon. He's not available, I would just say, for a while. I will not Yeah. say anything else. More Okay, bike, so but I would like to take this question. I'll simply tell you I'm biased. I want Bruno to stay, and ये I मेरे को will be क्वेश्चन very तो पढ़ने दे. More bike, don't very you think adverse. अब इस पोजीशन में Amorim खिला रहा है Bruno को, he needs run more and he can't. So Sanchit is running that agenda ना कि तुम अगर इसको साला को गाली दे रहे हो तो तुम इसको भी दो, ब्रूनो को भी दो. Like with regards to this, मतलब ठीक है यार. I mean, I am biased, man. I am biased towards my team, and Bruno is my favorite player currently. All right. और वरुण को एक चीज पता है, आई कैन नॉट वेट टू गेट ब्रूनो रिटर्न ऑन माई जर्सी. ठीक है, और मैं नहीं लिखा सकता जब तक वो है क्लब पे. तो एज Oh, सून एज ही लीव्स आई विल गेट दैट डन. उसका रीजन क्या है वो मैं कभी और बताऊंगा, या मैं बता चुका हूँ बहुत बार पहले.
But yeah, I would want Bruno to stay here as much as I can because I am biased. ठीक है यार, वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे नहीं खेल रहा है, बट अब देख लो ना, अभी जाएगा ये क्या नाम है, एम्बूमो जाएगा एफकॉन, तो मे बी शायद ब्रूनो प्लेज अप टॉप ऑलराइट इन हिज पोजीशन, तो क्या पता, अभी देखते हैं क्या होता है. I would hope Arsenal drop FA and Carabao. So we're gonna move on to the Arsenal topic, Mohit. I think we covered United very well. Hmm. I would hope Arsenal drop FA and Carabao. It's unnecessary matches. Rest in December. Come back roaring for UCL, Premier League, LFC. Also won because in Jan they had only one. Swayam, I completely disagree with you. वो बोलते हैं ना कि भाई हमसे हमारे हाथ से मूंगफली नहीं टूट रही है और हम लोग बोल रहे हैं गांठ से अखरोट तोड़ लो, क्योंकि प्ले एवरीथिंग वी हैव द, तुमने इतना स्क्वाड डेप्थ क्यों रखा है? यू हैव प्लेंटी ऑफ गुड प्लेयर्स टू प्ले ऑल द मैचेस. डोंट ड्रॉप एफए कप, डोंट ड्रॉप कैराबा कप. Pep Guardiola and all Manchester City fans used to say this, that Carabao Cup used to be one of the most important cups for Pep Guardiola in the initial when he won, starting में जीता था. Why he used to say was कि इतना इट्स, तुम अपने यंग प्लेयर्स को खिला सकते हो, एंड बाय द टाइम यू रीच द सेमीफाइनल, बेस्ट पार्ट है यू गेट 2 legs इन कैराबो कप. तो इफ यू हैव अ बैड डे आल्सो यू कैन मेक अ कमबैक इन द सेकंड लेग. एंड फाइनल तुम जीतते हो तो दैट फाइनल हैपेंस इन फेब, आई थिंक मार्च में होता है दैट फाइनल. इमेजिन यू आर इन द रन इन, तुम्हारा 5 या 6 पॉइंट का गैप चल रहा है इन द प्रीमियर लीग, एंड यू डूइंग एंड यू विन अ कप just before going into that run in of tough matches in April. Imagine the players on that high, they've tasted some silverware and they're like मेरे को और जीतना है, now मैं एक trophy जीता हूँ, I am a winner. So they go Hmm. in with that mentality. So I think Pep had the right idea, and I think Wenger did not understand this when he used to throw away the Carabao Cup. Arteta, I think, understood it last season. We did went to the semi-final. We got screwed by Newcastle, so we have to go and look at that with that mentality rather than thinking कि भाई it players injured हो जाएंगे. अभी न्यूज़ देख लो ना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, प्लेयर्स इंजरी का तुम छोड़ दो, वो घर पे बैठा बैठा इनका कोल्ड पार्मर he got injured because he fractured his toe. क्या कर रहा Yeah. था? He fractured his toe at home. तुम Yeah. पिच पे छोड़ो, वो घर पे साला इंजरी करके बैठ रहे प्लेयर्स. ऑर्बिट तुमको क्या हो गया पहले बता मुझे. राहुल भाई इज इन रिहैबिलिटेशन, ही इज ट्रेनिंग विद द टीम, विल बी बैक सून. अभी भाई देखो, राहुल, Varun and I are the only true fans who will stick to their teams in mud, all right? But look at these Liverpool fans, man. Such pussies, I look tell at you. the Chelsea fan Mayur, he disappeared as soon as his team started doing bad. नहीं तो कितना हाँ, I बोलता था. mean, Chelsea fan देख लो, बस हम लोग ही है जो आते हैं. ओए, द मड ब्रदर्स. ब्रो आपको इंजरी का क्या है? लाइक आर्टेटा का ट्रेनिंग का इशू है विद हैवर्ट्स, ओडेगार्ड का नी में हुआ क्या है एक्चुअली? सो द इंजरी का जो हमारा ट्रेनिंग का इशू तो डेफिनेटली कुछ था और है. Many players are getting injured, they are being overworked. I was hoping this season with the squad depth enough resting time would be given to these players, but I guess abhi bhi there is something going on. Havertz, Odegaard, you look at Madueke who got injured after being so good. Odegaard, I genuinely think he was unlucky because उसका तुम comeback देखोगे, he played 2 or 3 matches और वो 2 और 3 matches में he was tackled pretty badly or he fell down in a very odd position on his shoulder और उसको बहुत गंदा tackle लगा. So those are injuries which I'm fine with. Injuries that happen due to hamstring खिंच गया और उसपे मसल इंजरी हो गई, ये सब इंजरीज में ज्यादा मेरे को गुस्सा आता है rather than तुमको टैकल किसी ने मारा और तुम्हारा मतलब बहुत गंदी तरह पैर ट्विस्ट हो गया या समथिंग दैट. those injuries are fine because that is football, it is a contact sport, those will happen. Yeah. स्पाइसी रिव्यू चल रहा है इधर. मो भाई, डोंट यू थिंक अब जिस पोजीशन पे एम्बोरियम खिला रहा है ब्रूनो को ही अच्छा ये हो गया भाई. सबसे थैंक यू सो मच रितिन भाई, ये सच निकल गया मो भाई. यू कैन नॉट से दैट यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर एंड देन से यू वांट ब्रूनो टू स्टे एज लॉन्ग एज पॉसिबल. कम ऑन ब्रो. अरे नहीं नहीं बोल रहा संचित, मैं ठीक है, ओके, वी लेट्स मूव ऑन फ्रॉम ब्रूनो, ओके, बट लेके तो आओ, उसका कोई रिप्लेसमेंट लेके आओ. अच्छा ये अच्छा टॉपिक है. सो सिंस वी मूविंग टू आर्सेनल, सो आई क्लेम दैट आई वुड लव टू सी सेमेन्यो एट आर्सेनल. Problem with that Semenyo ka thing is Arsenal have already, got a lot of players this window and in the forward position. We do not have a position open.
हम्म बट उसका जो प्राइस टैग एंड द प्लेयर दैट ही इज, हम्म 65 million में he हम्म is an absolute steal. I would Yes. say कि if Don Barreta is looking thinking कि let's go and think for the future and just get एकदम stack कर दो Arsenal की attack को, go and get Semenyo, man. I would love, but I think most likely Yeah, destination could be मेरे को Real लगा ये बोलेगा कि if that guy is actually watching our stream, please go get him. Madrid. साला. Please go get him. Varun by simple hai, injuries in AFC context is official maintain out of position standards, short frequent injury, investment squad bloat, maintains standard of OP, short injuries. Yep. According to Indicalia, Semenyo fiance wore a red dress while he proposed her, so it's sign that he will go to Liverpool. कुछ भी मतलब. Defective, please. We do not यूनाइटेड need भी तो आ Semenyo. सकता है. We need to fix the midfield. Absolutely. मतलब United need to fix the midfield first. They need to get a midfielder, and they need to figure out what defense works for them, man. Honestly speaking, यार, क्योंकि मेरे को लग रहा है यूनाइटेड का सबसे प्रॉब्लम है डिफेंस है. मेरे को नहीं पता कि तुम यूनाइटेड फैंस को क्यों नहीं दिख रहा है कि डिफेंस में इशू है. No, Is but it because you're winning matches? we have a bigger problem in midfield. He's right, because it's a very aged midfield. It's a combination of Bruno and Casemiro, and I don't know why Ugarte ko nahi mil raha hai chance, and probably why is because he's not press resistant. So we need a press resistant defensive midfielder up to play alongside Bruno and then replace him soon as well. Like अगर उसको पर next year बेच मतलब शायद next year बेच दें उसको Bruno को for some good money if we get him, and फिर then Yeah. replace him with a player. ऐसा करना पड़ेगा. And I think we might get a midfielder this winter only. So let's see कैसा होता है. He won't come to Arsenal. Jan में नहीं आएगा. Liverpool looks most likely, and second United. Liverpool is the likely destination. They can afford him. Liverpool needs to But fix their defense first. Liverpool will be idiots if they go and get Semenyo, because first and foremost they need to get a centre back. They Spend need that two money on a centre centre. backs. They need two Yeah. centre backs Yeah, so don't immediately. spend money on Semenyo if you have a limited budget. तुमने already 400 450 million spend किया है. If you are gonna get some funds in January, spend it on a center back. Your defense is struggling because of you are struggling because of your defense. Yep. Arsenal also were red though. United to Forest to Bournemouth also maybe staying. Born by nahi Plateau Martin को बेचो. Bring in Keenan Yields from Juve next under 21 superstar. ये real proven player का trend चल रहा है. Yildiz, Talent Keenan ID Yildiz का मैंने सुना काफी. talent ID. यार देख, we have got good talent ID. We got Mosquera in, who's looking out to be a great player. We have got lot of youngsters who are coming from the Haaland. MLS आया, who is now playing. जो last year he got a lot of games because we had injuries in the left back situation. But this season, because Calafiori is staying fit, MLS has been now on the bench. And obviously even Henkepi started as the left back in one of the matches. So we have got a lot of young players. We have got Max Doman, who's getting a lot of love from even the rival fans who watch him play. So we have a lot of talent ID तो हमारे वहाँ से आ ही रहा है. And yes, बाहर से लाना, Wenger used to do it a lot. I'm hope forward. You're right. मतलब I don't know much about Keenan Yields. Yields probably you are saying maybe I'll check him out. But sure, if he's good, why not? But अगर we sign a midfield in Jan, then going for Semenyo, I would take it. Yeah. Estavo is a gem, second youngest player after Pele to score 5 goals for Brazil, youngest goal scorer for Chelsea in UCL. Julian, how are you, man? If you've not subscribed to the channel, please do subscribe to us. We are currently, we are looking to get to 1,000 subs. I think I'm interacting with you for the first time. Chelsea का मैं पहले ही बोल चुका, मेरे को नहीं पता तुम्हारा क्लब कर क्या रहा है, ठीक है? Because No, you but it's guys are what he's talking about, I feel Estavo is a brilliant player. नहीं, एस्तावो तो बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है. बट इन टर्म्स ऑफ मैं आई थिंक लास्ट स्ट्रीम पे मैंने कहा था, चेल्सी का मेरे को मेन प्रॉब्लम अभी क्या लग रहा है, बिकॉज यू आर राइट नाउ हैविंग दिस बिजनेस ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे आ रहे जा रहे आज. आई डोंट सी अ टीम दैट इज सेट ऑफ प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग फॉर द बैच. जैसे तुम लोग का एक था जो पहले तुम्हारे प्लेयर्स थे, तुम्हारा कोर होता था वो चेल्सी, दे यूज्ड टू लव चेल्सी. But because right now you're treating it completely as a business,
तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट चेल्सी इज डूइंग राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दैट कि एक क्लब है, इट्स अ फुटबॉल क्लब, इट्स नॉट अ बिजनेस, एंड योर हम्म, ओनर्स आर करंटली ट्रीटिंग इट लाइक अ बिजनेस। प्लेयर्स, मैं बोल रहा हूँ ना कि इतने सारे प्लेयर्स ले रहे हो, इतने सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, तो हम्म। वो कौन है वो प्लेयर्स जो बोल रहे हैं कि मैं चेल्सी बैच, आई लव चेल्सी एज अ क्लब, आई लव स्टैम्फर्ड ब्रिज, आई लव द फैंस, ऐसे प्लेयर्स कहाँ है यार? एस्तावो भी जेम है ये वो, बट क्या पता भी एक सीजन साल बाद रियल मैड्रिड आती है एंड दे ऑफर यू 100 million फॉर हिम। आई एम श्योर योर टीम, योर क्या बोलते हैं उसको, ओनर वुड लव टू सेल हिम एंड ही वुड लव टू गो देयर। आई हैव अ फीलिंग कि ऐसा होगा। Are you sure Julian is a Chelsea fan? I तो think देख so. के I तो feel पूछ Palmer's. I think that's what he meant to. That if he's not, then I'm really sorry. for going on this. Yeah. I feel Palmer's injury is the right time to like Estava probably. देख यार वो चेल्सी की बातें कर रहे हैं। Subscribed है वरुण भाई. I got to know. Thank you so much, man. KV is love, man. He's my क्या बोलते हो उसको? He's my other half when it comes to Arteta. No, I'm telling you, these two are my two idiot brothers who took this stupid decision of supporting Arsenal. Chelsea wholesale में players खरीद रही है। Exactly. Varun bhai, if Savinio joins Arsenal, then he has to sacrifice the game time cause there's Martinelli, Eze, Trossard, Madueke, Saka. He will not sacrifice the game time. Uh, so you've named players. Martinelli, Trossard are players that can be benched. Madueke can be benched. Eze and Saka की बात आती are the only two players out of this list that will start, that deserve and will demand a starting में, because obviously. So Saka plays on the right, Eze plays on the in the center, and you can still start Semenyo on the left side. I think Semenyo का preferred position is right side, Mohit. नहीं, हम लोग तो उसको लेफ्ट विंग बैक के लिए देख रहे हैं. हाँ तो वही तो मैं भी मतलब लेफ्ट पे ही सोच रहा हूँ उसको सेमेनिया को. तो आई वुड लव टू सी हिम. ट्रोसार्ड, मैडवेक एंड मार्टिनेली कैन बी बेंच्ड. I am not even confident Chelsea against Burnley away because okay, lost club. वो तो बर्बाद कर दिया है क्लब को न्यू ओनरशिप ने. until and unless we win a big trophy I will never trust the owners, but there are some quality players. I never said Julian about I think a Chelsea fan ही है मुझे. so so what I would say, I did not care. I'm not talking about the trophies, Julian. I was talking about the feeling about a club. जैसे you as a supporter love the badge. I so Arsenal में if you go right now, you will see a lot of players, kissing their badge and they'll be like, I love Arsenal. तुम United में अभी देखोगे एम्बो में कुनिया आया तो they're like, we want to play for United. Embo could have gone anywhere, but he chose United because he wants to play for United. It was not about majorly about the money. And you go to Liverpool, there's Salah, there's those players who want to play for Liverpool, who love the club. City के अंदर हालैंड को नहीं मैं गिनूंगा, but there might be some players who will say I want to play for City. So you want the football is a business, but we as fans who think it as something more personal, you want the players to also think it as something personal. I'm talking about that love does not seem to be there for Chelsea right now from the players. I think that's missing, and that will irreversibly hurt you. Winning trophies does not bring that feeling. Arsenal have not won a major trophy in 21 years. But still, we have seen a lot of players come in the club just because they had that nostalgia of Henry. They had the nostalgia of the Invincibles. वो बोलते फैब्रिगास मेरे को वैन पर्सी बोलते हैं वो nostalgia मेरे को तुम्हारे प्लेयर्स में नहीं नजर आ रहा. मैं भी मतलब ठीक है. दे अनप्रेडिक्टेबल दो. सिक्सर अभी बारसा से हार दिया तो लॉस क्लब कौन होगा फिर. एंड देन ओडेगार्ड का गेम खत्म है. लेट मी टॉक अबाउट, मैंने बात ही नहीं करी है, सबसे बड़ा मैच है. Let's get to the actual game week predictions. All right. Yeah. So नहीं नहीं गेम वीक प्रेडिक्शन नहीं. आई नीड टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट मैच, बिगेस्ट डर्बी इन प्रीमियर लीग राइट नाउ. दैट इज द आर्सेनल वर्सेस स्पर्स, नॉर्थ लंदन डर्बी. सो कुछ भी क्या, अब तू मेरे को बता और कौन सी बड़ी डर्बी है. यूनाइटेड और लिवरपूल. व्हाई डू यू गाइस कॉल इट अ डर्बी? मेरे को समझ नहीं आता है. Didn't you see the last match? Did you see how what happened, what transpired in that क्या game?
and That the is the ripple. rivalry that has existed. I'm talking that's a rival that existed. That's not a derby like they are not your neighboring derby. मतलब वो तुम्हारे And not Man in the City same and city. United is pretty fiery as well. नहीं, North मैन London सिटी derby. यूनाइटेड तुम लोग उनको जब तक क्या ऑयल मनी नहीं आया था ना, तब तक तुम उनको अपना राइवल भी नहीं गिनते थे, इसलिए रहने दो. Please shut up. Like, I think NLD is nothing compared to United Liverpool and Manchester City versus United. All right. तुम्हारे पास जितने प्रीमियर लीग्स नहीं है ना, उतने हम लोग हमारी जेब में लेके घूमते हैं, ठीक है, दोनों क्लब्स में जाके. ओके. एंड में जाके साले तू है ना अभी खाली ट्रॉफीज पे आ गया. आई नेवर केयर्ड अबाउट द ट्रॉफी. तू आई नेवर टॉक्ड अबाउट द ट्रॉफीज. I was talking about the feeling of hatred that exists between two clubs that is not bigger than anything than Arsenal versus Spurs. These two clubs hate each other the most. you are okay. You are a rival of a team whose badge is on a basketball. A bird, a cock is standing on a basketball. Okay, and they're a football club. Okay, and you're talking about that rivalry, and I mean, what Varun? What is this rivalry? Like, they have never challenged for the league ever, and you guys haven't challenged for a league, in the longest time. Yeah, So we've been how challenging for our last 3 seasons, man. क्या बकवास कर last रहा है? 3 seasons? खुद तो आर्टेटा के कपड़े उतारता रहता है कि उसने कुछ किया नहीं, उसने कुछ किया नहीं है. And then मैं you ऐसे say, कुछ किया नहीं बोलता नहीं, मैं बोलता उसने बहुत कुछ किया है, उसने हमको खाली ट्रॉफी नहीं जीता है. Give 1 million to a Spurs fan, he will turn to an Arsenal fan. Dude, I am sure ईशान यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबको अगर 1 million ऑफर हो गया ना, they would be ready to turn. 1 million is a very big amount. मैं हाँ, टर्न नहीं हो कितना रहा. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए हो गए भाई. योर लाइफ मैं चेंजेस विद दैट मैं मनी. मैं बोलूंगा हाँ मैं टर्न हो जाऊंगा और फिर मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा और फिर मैं आई वोंट टर्न. Your life changes with that money, man. Varun, Julian, I'll take the Chelsea comments थोड़ी देर बाद. I'll star it and keep it in the back. We'll take it when Chelsea come under discussion. Yeah, और yeah. पहले NLD is best for streaky Banter anyway. So, Moiz, I said it with Roshi, and I'll say it to you as well. Say it to you as well. Uh, Hmm. I do not see Spurs scoring in this match Okay. tomorrow. Okay. Interesting. Arteta did come out and say कि Gabriel का they don't know. He's out for weeks, and Kepa should start in his Hmm. stead. I Hmm. and Calafiori का कल पता चल जाएगा if he's fit or not. बाकी Hmm. he did not speak on many injuries because he's waiting for the training session tomorrow. So he said Hmm. कि कल training session में I'll get to know which players are fit. That's why he did not comment much on them. He did say one thing which I am excited for. I know many Arsenal fans and even rival. You might laugh at it, but I would say for me it matters because I really like the player. Gabriel Jesus will start playing matches internally very Okay. soon. So he's gonna be back Oh, come hopefully on. by You have Jan. Jesus in your team. Yes, we have Jesus in a team. Yeah. And उसका भी he was unlucky. तुम्हारे match में ही in January he got an ACL injury. So he So, tackled Bruno, and but Bruno ACL gets a injury, yellow he card. got a similar injury that I got. So he tackled Bruno, and Bruno got a yellow card for shouting that this is probably a tackle and it should be a penalty. And then you guys, and yeah, और इंजर्ड हो जाते हैं. भगवान ने मारा है उसको. भगवान hit him. कि, this is what you do. This is what you get. Try and injure players. Pathetic. At the end, it's all about trophy. So, anyways, I said they're not gonna score. Spurs ka attack is pretty shit. Uh, I don't rate. I don't rate any of their players other than Kulusevski, Vendeven, and Vicario. I like as a short stopper. Other than him, in the corners. बाकी में he shit, but I do not rate any other player. मेरे को पता नहीं क्रिश्चियन रेमेरो के लिए कितना प्यार क्यों है. ही इज अ बोजो एंड वो बहुत मिस्टेक्स करता है, बहुत ओवर हाइप प्लेयर लगता है मेरे को, जस्ट बिकॉज ही वन द वर्ल्ड कप विथ अर्जेंटीना. आई डोंट इतना कुछ वो नहीं है, मतलब अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप भी सबको पता है, काफी लोग यहाँ पे जो मैच देख रहे हैं सबको पता है कैसे जीते थे वो लोग. एनी फैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दैट रनिंग अ क्लब इज नॉट अ बिजनेस एब्सोल्युटली इग्नोरेंट.
A simple words explain transfer window buy and नहीं Completely any agree. fan I completely agree with who the does not statement. understand that running club is not business is absolutely simple words explain transfer window buy and sell. नहीं मैं तो बोल रहा हूँ it is a business मेरे भाई. What I'm trying to say is that we as fans take it personal. We've seen players also take it personal कि I love the badge, but if we also say कि ये business हो रहा है इधर business होने वाला है और बस हम बिजनेस देख रहे हैं किसका बिजनेस अच्छा करता है. शेयर मार्केट चल रहा है और वो जो टेबल पे ऊपर नीचे जा रहे हैं शेयर मार्केट पे प्राइस को किसका स्टॉक ऊपर जा रहा है. अच्छा 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 मतलब ये वो अरे तेरा स्टॉक अच्छा कर रहा है. मतलब वी आर नॉट लुकिंग एट इट बिकॉज देयर इज इमोशन joined to it and I would like to see that emotion from the players and the owners. Do your business on your money, do whatever you want to, but treat but also understand that there's emotion involved and if there are players who want to and who playing good. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब players जो बैच के लेकर उनको भी रखो, but if there are players who want to play for the badge and they're playing good, try to keep them rather than treating them as commodities or assets कि इनसे हम पैसा कमाएंगे. एक तो ये स्पर्स जो नॉर्थ लंदन पीछे खींचे आ रहा है. अभी स्पर्स में प्रीव्यू शुरू हुआ बाय द वे. इतनी ट्रॉफी टॉक्स ऋषि भाई की संगत का असर हो रहा है मो भाई पर. लगता है मो भाई भी स्पेनिश विंग में घुस रहे हैं सपोर्टिंग मैड्रिड. नहीं, टॉटनहम गेट्स ये बैटेड एवरीवेयर दे दो एब्सोल्युटली. अरे 10K ये ही दे दो ये मो दोनों भाई. क्लब सॉरी ये दो क्लब्स को बैंटर करने के लिए आई थिंक ट्रॉफीज आर इनफ. हम लोग को प्लेयर्स भी उतारने नहीं पड़ता. वो भाई रेवलरी इज नॉट द सेम एज डर्बी. एनएलडी एटमॉस्फेयर यहाँ पे ट्रॉफीज काउंट नहीं हो रही है. मैच व्यूअरशिप देख लो. आई डोंट थिंक सो यार. हाउ आर यू क्लेमिंग दैट दिस हैज मोर व्यूअरशिप देन यूनाइटेड लिवरपूल? क्योंकि यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी के मैन इतने सिटी फैंस नहीं यूनाइटेड, है. मैन मैनचेस्टर सिटी सिटी के यूनाइटेड. Okay, या I thought he was talking about Liverpool United, which has a नहीं, far Liverpool more United viewership. as a match and as a rivalry is definitely bigger. I would not say because you guys have been the only problem that I've always had in the Premier League में जो मैं अभी भी miss करता हूँ, which I want to see. Probably I am hoping that happens in the next in my lifetime, or maybe in the next 5 years, or in my lifetime it happens. I want to see United and Liverpool going for the title together in a season. Hmm. Imagine they both don't win the season and imagine next season ऐसा होता है कि United are somehow now playing amazingly well. Hmm. Imagine Liverpool have now started clicking. Both are gunning to get that 21 वाला title कौन लेगा. That would be a rivalry to watch, man. That would be a season to watch. Hmm. क्या हम देख रहे हैं मतलब never you guys have never been on the same level ever in the Premier League history. Set piece, surprisingly Spurs also take a lot of set piece and Vanderwin is one of their top scorers. Arsenal fans had the same complaint about Kroenke for years. वही तो मैं कह रहा हूँ Julian कि as a fan that's why we did not like him very much. Obviously players नहीं उतारना चाहता मो भाई. प्लेयर्स उतारनी पड़ी तब तो धोती खुलवा देंगे उगाड़ते दालो एंड कंपनी. Okay. Varun bhai, Mo bhai, but don't you think over the years Chelsea or Spurs has been more fiery away than any? हाँ, so yeah, मैंने I think recently बोला भी था Julian, I don't remember किसकी stream पे था, but I did say कि so Chelsea and Arsenal की rivalry खत्म हो गई है. The hatred is gone because the amount of business that these two clubs have started doing. अब तो I think fans को भी पता लग गया. हम साले वो होते ना वो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे को गालियां दे रही है ये वो और नीचे के एक दूसरे के वर्कर्स एक दूसरे को काट माट कर रहे हैं. फिर ऊपर एक फोटो आती है कि दोनों ऊपर वाले पॉलिटिशियन बैठ के साथ में दारू पी रहे हैं, मस्त नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन विकन खा रहे हैं, चकना खा रहे हैं और नीचे के वो काट के बोल रहे हैं मेरा ये मर गया वो मर गया हम तुम्हारे लड़ रहे हैं. तो बेसिकली ये हो रहा है. चेल्सी और आर्सेनल बिजनेस पे बिजनेस करे जा रही है एक दूसरे के साथ. ऊपर मस्त लवी डवी चल रहा है और नीचे फैंस एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं. आई थिंक नाउ फैंस हैव आल्सो अंडरस्टूड कि भाई इनके साथ हमारी राइवलरी है क्या जस्ट बिकॉज वी आर इन देयर प्रॉक्सिमिटी एंड वो नॉर्थ लंदन इज रेड लंदन इज ब्लू हम करते रहते हैं और ऊपर तो मस्ती मजाक चल रहा है. वरुण भाई ये क्या इमेजिन करवा रहे हो मो भाई से कि अगले सीजन दे गो अहेड फॉर टाइटल कैमरा ऊपर करना पड़ जाए क्या उनको.
Yeah, that side Arsenal rivalry is not the same. मतलब हर सीजन बिजनेस कर रहे हैं, वो सिर्फ एंकर के अंडर नहीं होता है ये सब. Exactly. क्लब के अंदर भी नहीं हुआ बेचारा, उसका भी उठ गया। यार अरे नहीं, भाई बहुत मतलब आई वाज जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल कि इन आई वांट टू सी इट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स. मतलब ऐसा ना हो यार मरते दम तक साला देखने ना मिले और लिवरपूल एंड यूनाइटेड प्रॉपर चैलेंज दोनों की तरफ से. आई वुड लव टू सी दैट मैन. But to be honest, in the longest time, I haven't seen these two challenge each other नहीं हुआ है ना, वही तो constantly. मैं कह रहा हूँ. लॉन्गेस्ट टाइम क्या, इट्स नेवर हैपेंड इन द Not प्रेम. happened in the Prem. So इट्स जब नेवर हैपेंड इन द United प्रेम. United top पे थी तो we were fighting against Arsenal and Chelsea, and then towards the end with Man City, and या then Man City just took over, and या then Liverpool and Man City went head to head, यप. um, and वो I एक think सीजन जब वो जो स्टीवन जेरार्ड का स्लिप भी, दैट वाज बिटवीन लिवरपूल एंड चेल्सी, उसमें no, भी that यूनाइटेड was इन्वॉल्व नहीं थे. हाँ, Liverpool, Chelsea, correct. या उसमें भी And Man लिवरपूल City. इन्वॉल्व I नहीं think Man थे. City सॉरी. जीती थी शायद वो सीजन. या हाँ, तो मतलब वही कि उसमें भी तुम लोग इन्वॉल्व नहीं थे. तो Yeah. मेरे को यार देखना है विद यू एज अ न्यूट्रल राइवल फैन. आई वांट टू वॉच दीज टू क्लब्स गो एट ईच अदर कि साला. और वो हेटरेड जो होगी ना, मतलब द फैंस, मतलब दे हेट. मैं तो राहुल जब आता है, मोहित एंड राहुल hate each other when it comes to their clubs. So imagine now they're going for the title. So wo banter or wo hatred would be next level. So Yeah. anyway, I'll go. There's nothing much to speak about Spurs and Arsenal. Yeah, aa gaya dekho. When I thought I won't have anyone rage baiting me from the Spurs side. और मेरे कौन चैनल आया पे एक भाई आ गया. इतने कहाँ दिनों से बाद? निकल के ये भाई आ गए हैं. अभी क्या को तो बात चैनल है, पे दिखा नए था नए. ना अभी। हाँ, अभी तो चैनल पे आया था अभी लास्ट टाइम। अभी आया भी था लास्ट. आई थिंक लास्ट टू लास्ट स्ट्रीम पे ये था भी. क्या बात है, नए नए स्पर्स फैंस देखने मिल रहे हैं मुझे इस साल. ये सब कहाँ गए? कौन स्पर्स फैन? तू अकेला ही तो है साले. सो ऑन साइड बंजारा, अच्छा, वो क्या उसको लग रहा है हमने वाइट पहन रखा है? उत्कर्ष, रोशी, अच्छा, इज कौन टॉकिंग कर अबाउट. लो? ओके. या अरे, सो राजवीर इज कीपिंग he's having a screening on Sunday which I won't be attending because I'll do a watch along यहाँ से. So he said that जहाँ पे वो स्क्रीनिंग कर रहा है वहाँ पे स्पर्स फैंस भी होंगे. तो वी वर ऑल कंफ्यूज कि अहमदाबाद के अंदर स्पर्स फैंस है. तो क्या वो लोग मेरे को पता है वो क्या करने वाला है। क्या वो कर एक लैपटॉप खोलेगा और हाँ. कैमरा पे जो स्पर्स फैन यूके में देख रहे हैं वो लोग होंगे, तो वो लैपटॉप पे स्पर्स फैन वहां पर है। तो अबे जो सिटियों पे कोई राइवलरी होती है, हग्स एंड किसी ये देखो, दिस गाय अंडरस्टैंड्स मी. मैं यही बोलता हूँ, मेरे को कोई आके बोल, मैं तो लिवरपूल और सिटी वालों को जब भी देखता हूँ ना, और मैं ये बोलता हूँ ना बात, दे आर लाइक, आई रिमेम्बर गोइंग ऑन दैट मिस्ट्री स्ट्रीम. मैं और अंकित भाई भी यही बोल रहे थे, ऑलमाइटी ब्लू संगीत भाई, कि ये क्या राइवलरी है. मतलब यार तुम लोगों की इसकी राइवलरी है. एंड यू कुड सी even Piyush and I think it was Pratmeshta who was there. So I'm so sorry if I forgot the name. I'm very bad with names. Him and Piyush were like, I really like you, man. I really like you, man. I really like your club. I really like your club. बस स्क्रीन दोनों एक जगह होते ना तो बस चालू हो जाता. बोला यार fuck off. वो मैं अगर ड्रॉ भी हो गया ना, कच्चे वो फाड़ दूंगा. मैं तेरे को फुटबॉल देखना है कि तेरे को ये सब ही करना आता है? तेरी और तेरी टीम को खाली कच्चों के बाहर नहीं निकलते तुम लोग. भाई वो आई डोंट नो व्हाई लास्ट टाइम वो क्या नाम है उसका, रिचार्लिसन ने अपना बनियान तो निकाल दिया था, उसको बोलना इस बार कच्चा ना निकाल दे भाई, देखना। और फिर कच्चा निकालेगा और फिर वो रेफरी वहां से बोलेगा अरे ऑफसाइड है ब्रो, गोल, सॉरी। मेरे को ना बेस्ट लगता है व्हेन एवर रिचार्लिसन टेक्स ऑफ हिज शर्ट. कुछ ना कुछ सिटी होता है उनके साथ। स्पर्स उसी के बाद स्पर्स गोल खाती है वो मोमेंट के बाद. अरे भाई I जब याद still है remember the late great Diego Jota का goal. I think it happened last season or last to last season. I don't remember. भाई Uh, Richarlison had just joined Tottenham, I remember, and he could not score for the longest time, और जब उसने 2 बार स्कोर किया, दोनों टाइम ही सेलिब्रेटेड है, दोनों टाइम उसने बोला ऑफसाइड है, और उसमें से एक बार उसने टी शर्ट निकाला था अपना, फॉर श्योर मेरे को ये याद है। ऑलराइट। तो रिचार्लिसन तो क्या बोले, इनफेमस है ये सब चीजों के लिए। City ने यूनाइटेड को relegate
कर रखा है फ्रॉम इंग्लिश लीग बाय देयर ओन लेजेंडरी प्लेयर डेनिस लॉ फॉर सिटी। इतनी जिल्लत एएफसी कभी नहीं सहा डर्बी में। मो भाई एएफसी बस हैरी केन को गोल्स देते थे। ये ट्रू। हैरी सारी में केन थोड़ा फ्लॉप। अच्छा उतार दो, मे बी इट्स एंटी जिंक्स। वो साला रिटर्न लोडू है बता दिया। गाइस You know, the प्लीज best part about Abhi, he is Abhi is pretty funny when he comes out with जो वो बोलता है. I really like him. But when he came on the channel, he was very I would say I did not find him delusional at all about his club. He was very realistic, very grounded about his own club. He understood कि मैं कैसे क्लब को सपोर्ट करता हूँ और मेरा क्लब कितना घटिया है. He was very grounded with his things and I really liked it. Hey you better Sixer, be grounded with what you're saying. And guys, by the way, हम लोग गाली देना कम कर रहे हैं चैनल पे, ठीक है? तो तुम अरे लोग कितना मैं चैट में मत लिख के हमसे बुलवाओ, ठीक है? पॉइंट ये है कि हम लोग को या गाली नहीं देनी। अपेरेंटली वो पीयूष के आई थिंक भैया हैं, कौन है जो हमेशा मेरे को बोलते हैं वरुण गाली मत दो। सही में आई थिंक सो। गाली मत देना। मेरे को तो मैं तो चैट में गुस्से में दी थी तो मेरे को बोला वरुण वरुण चैट में गाली मत दो, फैमिली वाले देखते हैं। मैंने बोला बाप रे। बोले ऐसा तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला। मेरा प्रॉब्लम यही है कि बड़ा होके रिदान विदान को देखेगा पुराने जाके स्ट्रीम स्टोर्स पे वरुण और मैं गालियां दे रहे हैं और फिर वो हमको देख के गालियां दे। नहीं 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 नहीं। वे अक्सर तू पहले आदमी है जिसको रिचार्लिसन का डैश देखने की फैंटेसी है। अरे वरुण भाई एएफसी की प्रॉब्लम टॉटनहम नहीं है। माइकल ऑलिवर ही विल कम आउट बी द शो रनर। मेनी फैंस फियर डिसीजंस की डिबेट रहेगा पोस्ट मैच। Don't give him a chance to give such a bad decision. I would say stop making referees relevant. Play your match, play your game. And अगर वो decision देता है, just move on from those decisions. Best example I would say is when me and I think I was doing. I was doing the Newcastle United. I was doing the watch along. In that match, I was very pissed off that Saka and Gabriel were stuck up on decisions with the ref on the first half. जब 1-0 हम लोग down थे. I wanted them to move on from. In second half में you could see probably Arteta ने किया था. He told them to move on from the decisions. In second half you saw us, came back. We won the match. So that's how you do. खराब decision हो, be upset at the moment. Complain थोड़ा बहुत, but don't get stuck on the decision. Move on. और ये वो घटिया है। अगली बार आने दो। वो ओडेगार्ड साला मेडिसन रीजन सब अंदर ही बड़ा निकाल दूंगा। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, निकाले जो निकालना है तेरे को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीएमसी? बटर चिकन, क्या ही मटन कीमा मटन and कीमा? सीरियसली यू डोंट थिंक कीमा इज स्पेल्ड बाय मटन चिकन, बटर भाई का भाई का लगन, भाई का भाई लगन। का लगन। भाई का कलीग। Spurs fans are actually very grounded. They know that their club is shit, but they still support them. Respect. वो रिचार्लिसन का okay. Spurs की बात हो और गाली ना हो उस सेंटेंस में, कम ऑन मो भाई, इवन रैशफोर्ड जूनियर वुड अंडरस्टैंड कि इट्स स्पर्स, कि इट डिजर्व इट। वरुण भाई एशेस देख रहे हो क्या डे वन? नहीं यार ब्रो, आई एम नॉट वाचिंग क्रिकेट। आई विल बाय, सो गाइस आई विल बाई बाइंग क्रिकेट 26 आ गई है ऑलरेडी। आई विल बी डूइंग स्ट्रीम्स ऑन दैट ऑन बैंटरवर्स, but not right now because I'll have to. I'm gonna mostly do that during India wale matches. No, you should do the Ashes वाला टेस्ट मैच ना on cricket वाला thing. अभी तो cricket 2026 आ रही है apparently and वही तो it's कह रहा हूँ, आ गई है, आ गई है। I'm gonna buy that. That was I'm saying cricket 20. play it on vertical. Okay, okay. There is a guy जो मैं कभी कभी स्क्रॉल कर रहा होता है ना शॉर्ट्स पे तो मेरे को आता है वो बंदा वी वी ये इसमें वीआर में क्रिकेट खेलते रहते हैं। आई डोंट नो, वो मैंने देखा हुआ है। अच्छा है, काफी अच्छा है। और मैंने उसको खाली सिर्फ छक्के ही मारते देखा है, मतलब लोग बोर नहीं होते उसको छक्का मारते मारते देखते देखते। तो आई गेस वर्टिकल स्ट्रीम में कुछ तो होगा। Anyway, so I'll do my predict. I think it's gonna be 2-0 versus Spurs. चलो ठीक है। बाय द वे
मोबाइल को क्या हो गया लास्ट टाइम भाई? आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद माय दाढ़ी. I'm telling you, the way he is, the guy has, given me a trim. Look, it's looking good. Every हाँ, वो like सो a बेसिकली वो जब यहाँ से फेड करते हैं ना, मेरे को वो करवाना है. सो व्हेन यू yeah, डू अ फेड, कम इन लाइक दिस, यू हैव अ थिकर बियर्ड हियर, यू लुक स्लिमर. yeah. So it looked really good. A few people have told me that, so अच्छी बात है, including my wife. I was very happy. So Yeah, yeah, 1-1 by sixer. Okay. Mo, what's your prediction? 1-1. No, no. I think Arsenal will win 3-0. वैसे वरुण भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखो. आज से जब 5 साल बाद हमारे ग्लोरी डेज आएंगे तो आपका तो पानी नहीं पीने दूंगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जीटी मैं इस पे हंस रहा था बेसिकली. GTA 6 प्राइड क्या है? GTA GTA 6 ये में सिक्स प्राइड में प्राइड परेड्स है. Rahul, राहुल Rahul, what's up, man? I shared the stream with you. I know you are on a और राहुल का you are तूने unavailable. You are unavailable. I will not राहुल say का the तूने word because you asked me not to say the word. So I'll say you are राहुल unavailable. राहुल का तूने वो देखा हैंडल? राहुल स्टेल्थ. ही इज एग्जैक्टली व्हाट हिज हैंडल इज राइट नाउ. Yeah, ही the way. स्टेल्थ. वही तो like he stealth like his club. बस खराब मेरा क्लब अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं क्यों आऊँ स्ट्रीम पे. क्या बात मैं करूंगा मैं मतलब वही राहुल बोले तुझे कि इतना ही आके मैं बोलूंगा कि मेरा क्लब घटिया है, मेरा मैनेजर घटिया है, मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे हैं, सेंटर बैक अच्छा नहीं है, साला अच्छा नहीं खेल रहा है, बस यही हो गया. दैट्स ऑल लिवरपूल. दैट्स लिवरपूल का मैं सेगमेंट गाइस खड़ा हो गया, खत्म हो गया है. वी विल बी मूविंग ऑन टू नाउ चेल्सी. ये राहुल वी विल नॉट राहुल टॉक. राहुल राहुल का मैं एक्टिंग करूं? आज तो गाइस क्या कर सकते हैं, ऐसा ही होता है. लाइक देयर इज नथिंग मच टू से. फिर कोई एक प्लेयर का नाम मिस प्रोनाउंस करे. किसका? सो राइट्स तो ऐसे ही खेलता है. राइट्स राइट्स को टाइम लगेगा गाइस. और राइट्स को बट वी लव राहुल मैन. आ जाए जल्दी तो अच्छा है, सो वी कैन बी Yeah, थ्री we are मस्केटियर्स. hoping he becomes available again, so that because कम I miss him. I used to remember me and Rahul when we started the channel. Me and Rahul used to have Shankar and Sood show, जो हम दोनों अकेले करते थे, and then Mohit will join in. तो the show बिगड़ता नहीं था considering मोहित भी सूदी है. So I would love to. I want to start. I want to take the Shankar and Sood show to Banterverse. वहां पे हम कर सकते हैं दोनों. रिट्स के लिए, राइट्स के लिए, जस्ट ये मस्त चल रहा है. दिस कैंपेन जस्टिस फॉर वर्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स दैट इज गोइंग ऑन. Guys, it's I think it's the longest campaign since सास भी कभी बहू तक का सीरीज. मतलब इतना लंबा चल रहा है यार ये कैंपेन. Justice और for देखो पता है its. क्या हुआ है, सो अनलकी ही गॉट इंजर्ड, यू नो दैट ही इज नॉट अवेलेबल. What? सही में? या वर्ड्स एंड Isak. कॉर्नर What? ब्रैडली. Oh, and Isak is also injured. So they don't have words, they don't have इलेक्ट्रिक कार में जा रहा हूँ. कौन सी है भाई तेरे पास? आई फॉरगॉट व्हाट विच कार ही हैड, आई फॉरगॉट कंप्लीटली. Shout out to Ball to Hall Justice for Words. Shout out. हमको बॉल टू हॉल के साथ भी करना है यार कोलैब. इट्स बिन अ Yeah, व्हाइल. I know, I know. मेरे को आई थिंक आपने रितिन भाई बोल रहे थे. I read it. I think we were both unavailable. तू मेरे को बोला भी था कल, but I was already streaming. रितिन भाई ऐसा बोल रहे थे कि कमेंट्स में आ जाना. मैं अच्छा, नहीं ओके. बोल. ओ ओ हम लोग ओके. को ऐसा लगता है ना दिमाग में, हम लोग सेलिब्रिटीज बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं हमको. ऐसा नहीं है. वो बोल रहे थे कमेंट्स में आ जाना और सपोर्ट करना. हाँ, सॉरी सॉरी रितिन अच्छा, भाई. अच्छा. हमारी हमारा भी डिल्यूजन अच्छा है, बट डिलूलू हो ठीक गए है. हम लोग. नो, ईसाक इज फिट मैन. ईसाक को खाना लिवरपूल का दे दिया. ईसाक को खाना दे दिया इन लोगों वी आर ने. स्पीकिंग. राहुल आ गया कमेंट्स में, तो लेट अस टॉक अबाउट लिवरपूल. वैसे तो मैंने सम अप कर दिया था. दे आर फेसिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इज कमिंग टू देयर टाउन, एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन विल गिव देम अ स्टनर. डिलुलु इज द न्यू सोलुलु. अमूल सही में. प्रोटीन.
अमूल प्रोटीन दिया उसको. Exactly, It is guys. perhaps one of the worst proteins out there ना, तेरे को पता है ना अमूल प्रोटीन. Why? I mean, they should be making the best one because protein comes out of milk. और उनके ना पास दुनिया भर बिकॉज का milk है. उसका पर ग्राम रेशियो 100 ग्राम्स पे रेशियो बहुत कम है, तो it's like I think I last year was 10-15% था, which is very shit. So that's not what you expect from Amul protein at least. By the way, Uh, guys, if you guys eat Amul ice cream, don't eat Vadilal instead. Vadilal is way better than Amul. हमको नहीं खाना भाई फ्रोजन डेजर्ट. अबे नहीं है फ्रोजन डेजर्ट यार, हद तक कितनी बार एक्सप्लेन करूं, नहीं है फ्रोजन डेजर्ट हम लोग. इसके के लिए काफी है 10 से 15 ग्राम प्रोटीन. नहीं पर एक्चुअली इसके लिए अमूल ठीक है कंसिडरिंग उसको उसका वेट गेन होगा, which we all want. He's had to gain some weight after his Somalia regime. So I think ठीक है. Uh, वो so बंदा Liverpool is वो बंदा अन्ना हजारे डाइट पे था for 10 days. जब use उसको पता code चला. MO for extra discount on your nearest Wadilal outlets. वहां पे वो थप्पड़ मार के बोलेंगे आज बाकी के पैसे दे साले. अरे by the way, we were at an annual meet and I asked a question और मैंने ये बोला कि I talked to a lot of Gen Z folks and they said they don't know Vadilal, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ये मैंने बोला था. अब मैंने ये नहीं बताया कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ जेंजी लोगों से. कल Wadilal is dried dessert. आई सम मोहित जो इनका मतलब ये प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. द कंपनी इज टेकिंग द इंडियन पब्लिक फॉर अ राइड एंड वाडीलाल इज वन ऑफ द आई वुड से व्हाट्स दैट accomplices of this thing अबे is चुप big कर. You because wanna get- उनका जो एक्सपोर्ट का मटेरियल है, हम्म, एक्सपोर्ट का उनकी जो आइसक्रीम है, गाइस आई एम नॉट किडिंग, मोहित लेके आता है कभी कभी. That ice cream is fucking crazy good. And the best ice cream you will have is जो वाडीलाल एक्सपोर्ट करता है. हमको यहाँ पे घटिया आइसक्रीम खिला के, घटिया तो नहीं है, ठीक है प्लीज. घटिया आइसक्रीम खिला के ये लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं साले, वो आइसक्रीम इतना क्वालिटी डिफरेंस है, इतना टेस्ट में फर्क है, और उसे इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे, इंग्रेडिएंट्स भी एकदम टॉप क्लास. तुमको लगेगा यार क्या ये मतलब ये मेरी ये बॉडी बन रही है आइसक्रीम खा के. ये मेरे को फायर कराएगा साला, ठीक है. पहली बात तो ये खुद एक वाडीलाल का आधा डब्बा इसने खाया है जो नीचे पड़ा है. एग्जैक्टली चॉकलेट चिप. एक्सपोर्ट 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 नहीं है वो, बेल्जियन वो एक्सपोर्ट चॉकलेट नहीं था. यहाँ का है. अच्छा हाँ नहीं. वो मैंने क्योंकि मैंने कुछ स्पाइसी खाया था, आई वांटेड समथिंग, तो मैंने हाँ आई डिड ईट इट अप यस. हाँ तुम गांड पे भी लगा ले फिर, पॉटी करना है तो सुबह स्पाइसी अबे खाना क्या था. गंदी, इस तरह से मैं गालियां देना स्टार्ट करता हूँ चैनल पे, तू ऐसी गंदी बातें करने वाला है. Anyway, Anyway, so uh, we Mohit, it's been one hmm. and a half hour. We've been talking shit. We just covered two teams. थोड़ी बहुत I think इधर-उधर we covered the most important teams, guys. Thank you for joining. Yeah, and biggest teams कर दिए. City is facing a very big team in Newcastle. They have an important match, and so Piyush has said if Haaland stays fit, they are going to win the league. There were no ifs and buts other than Haaland staying fit. I want Haaland to stay fit. I want Arsenal to win the league so that I can go on Piyush's channel and then मैं चाहता हूँ पीयूष भी मेरे साथ शर्त लगाए, अगर हालैंड फिट रहता है और सिटी नहीं जीतती है लीग, आई वांट हिम टू गो बॉल्ड एज वेल. बे तू उसे सबको गंजा करने का तूने ठेका ले रखा है क्या पूरे इंटरनेट पे? This will be the तो boldest summer ever in the Indian YouTube history, YouTube तो creator तू history. तो तू अगर अगर क्या था, अगर आर्सेनल जीतती है तो तू गंजा होगा. मैं गंजा हो रहा हूँ. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट And मी I want पीयूष to get bald. फिर उसके अगर बाद सुनो सुनो सुनो, तो ये आर्सेनल फैन है बाय द वे, ठीक है. सो if Arsenal win, he will go bald. If Arsenal loses, KV will go bald. If नहीं, केवी is not going bald. केवी is not. केवी will eat something spicy. okay, so if Arsenal win, then this guy is also going bald, right? Roshi is going Roshi is bald. going. Roshi is going bald.
And now he is pulling in Piyush के अगर आर्सेनल जीतती है तो with Piyush will go. Haaland being fit. With Haaland being fit. क्या भाई क्या नाइस वन. जोलो चिप नहीं, जोलो चिप नहीं खाएगा, वो खाएगा वो 2 या 3 टाइम स्पाइसी रामेन आता है ना, वो खाएगा. जो मैंने किया है जोलो चिप यार, ठीक है. केवी के बाल चोक हुए. रोशी इज डूइंग बॉल्ड एंड ब्लैक फेस बाय द वे. ब्लैक. अरे भाई वो तो वही है ना कि he was like if United finish above Spurs then he's going to take a Snicker bar, mash it up and then put it on his face and then claim that it's his poop or potty. Yeah. So because he called United the I team. have, मैंने कहा है केवी को, if Arsenal win the league, me and him will go down to Delhi where Roshi stays. Live stream पे सेतु भाई इज गोना, वो एज वर्सेस कर्ट एंगल की तरह वो उसको लाइव क्लिपर से उसको गंजा करेंगे, और मैं स्निकर का या मार्स बार लगाऊंगा उसके सर पे. Yeah, I think I like that idea. या चलो. ब्लैक फेस नहीं भाई, स्निकर्स के बदले चॉकलेट वगैरह मेल्ट करवाएंगे उनसे. बॉल्ड तो बॉल्ड फॉरएवर. रोशी इज डूइंग केवी के बजाय, सो दैट इज व्हाट द प्लान इज. So yeah, City Newcastle difficult match for them, but I think City will end up winning. Uh, I don't know what's their head to head. Haaland is just in crazy form. It's not Haaland is that great crazy. for City. I think last year भी ये लोग ने draw किया था at St James's Park. So I think नहीं, this is it I might think at be. the Etihad. Is it? Yeah. No, St James's Park पे कुछ भी मत बोल. Oh अच्छा. Oh Uh, फिर तो it's very tough. it's tough. It's tough. So I think it could be a draw. But Haaland is in another form यार. मतलब वो बंदा अभी कुछ भी कर सकता है. So I think you never know, but I am going for a draw. Hopefully, City draw. And और कौन सा बड़ा मैच बचा? लिवरपूल हमने डिस्कस कर लिया. लिवरपूल I think will win easy against Nottingham Forest. Should not be a problem. It should And not be a problem, but you never know what sort of Liverpool turns up if they are not motivated enough. जैसा वो खेल रहे it's थे, at you know. it's at home, man. मतलब I don't think they should have any problems. And Nottingham Forest, to be honest, Sean Dykes नहीं होगा यार उससे. वो he's not that great of a manager. मतलब वो लोगों By को the way, इससे बचाने आता है, like relegation से, nothing else. Mohit, by the way, if you don't know, ब्राइटन का सबसे, देखो पता है ब्राइटन का सबसे बड़ा राइवल कौन है प्रीमियर लीग में? United. ब्राइटन का. हाँ, because You वो don't लोग know, वो it's हम Crystal लोग. Palace. अच्छा. हाँ, बिकॉज How आई did मैंने FBX क्लब फाइल्स के लिए पूरी रिसर्च करी थी साले, और तूने मेरे को वीडियो बनाने नहीं दिया. अभी बना ले. अच्छा, अब मेरे को दे रहा है साहब, तूने खुद किया नहीं, अब मैं नहीं कर, अब तो मैं नहीं करूंगा वो वीडियो. मत बना. पूरा स्क्रिप्ट बना के रेडी बैठा हूं मैं, और मैं बोल रहा हूँ मैं ब्राइटन का सब करके बैठा हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम आउट विद अ यूनाइटेड का वीडियो, एंड देन दीज बगर्स डोंट डू एनीथिंग. मुझे अरे मैं कर रहा हूँ, तू ब्रेंटफोर्ड कर, मैं ब्राइटन करूंगा. पूरा मेरे पास पूरा एसेट्स बना के रखे हैं, सारे पिक्चर्स जो मैं डालने वाला हूँ सब करके बैठा हूँ. नहीं, मैं करूंगा ब्राइटन. खुद तो अरे बट किया मैं नहीं, मेरे कह को भी रहा नहीं था, करने दिया. मैं जो कह रहा था बिजी हो गया था यार, तब मैं क्या करूँ बता मैं. बिजी हो गया था. हालैंड अभी कुछ भी कर सकते हैं, बोलो राहुल गांधी को दोस्ती करें. अब उसका ओनली होप इज अर्लिंग ब्रॉड हालैंड. और अर्लिंग कांग्रेस को जिता दे इंडिया में फॉर श्योर. अभी अभी इतना अच्छा खेल रहे हो. हाँ मतलब, आ, I would say if anyone wants to win, they need to work hard. Haaland works really hard, and I still remember his interview with Thierry Henry, where he asked Thierry ki how can I improve? You know, what would you change in my game? And that guy had already broken all the records in Premier League at that point of time. Haaland, मतलब in a single season. And he went up to Thierry Henry and asked. Thierry said कि तेरा ना एक problem है, if you come down on your तू अभी जितना भी आता है, you come up from the right side. If you can start coming from the left side ना, बोले you will kill this and you'll kill this league. And Haaland took his advice. I see a lot of things changing in Haaland's game as well this season. So I think he works really hard. He understands उसका talent है, he is something, but he works really hard. So my Definitely. advice to the the political question here would be, whoever
whomsoever wants to win something, they need to work instead of having a rhetoric, instead of just having a campaign. You need to work on the ground, need to make your base as well. Without that working hard wala partner, all the rhetoric, all the hype makes no sense. Hmm. Yeah, Brighton Brentford is a good game to type हो feel. Yeah, could be. Yeah. Release the FBX clients. Yes. कर दे वरुण, कर दे. If you have it ready, तो do ये it. did you understand this reference? Yeah, I know, I did. मैं ये बोल रहा हूँ Epstein कि files. हाँ, I know. मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को the way I wanted to make a video, I think I might go into a next the other direction. Maybe I know तेरे को मनी बॉल वाले सीन पे करना है पूरा उसको, but नहीं, I mean I I don't have, मतलब मैंने ऑर्बिट को बोला था कि I don't have time to release videos now. मेरे पास नहीं है. I don't have the time to research and then make videos. I might do shorts for them, like a three. So now YouTube allows 3 minute 3 का minute के short. short, 3 minute के shorts ले लो. Yeah, So I'll make it a 3 minute short. ऐसा कुछ कर लूँगा. yeah, could be. Brighton versus Palace, the birdie rivalry, and referee बनेगा जिमी वार्डी, जिधर से भी गोल लेगा सेलिब्रेट वार्डी करेगा. Yeah. Mobile, you following UA. No, I know. I was supposed to. All say Haaland performs because the team around. Agree to some extent, but he does his bit, and I have respect for him. Yeah, Absolutely, man. I absolutely. ब्राइटन All over मारती तो also. हमारे और यूनाइटेड की ही की लेकिन हालैंड न्यू व्लॉग कैन वी गेट 230 in 40 days? बहुत मुश्किल है. I hope so. I Very hope so. difficult. We are hoping we'll try it. I am trying to So, get few collabs in. If we can get those collabs, maybe we can get close to that number. so I'll tell you Uh, what. I just got a update on an email on 29th October that we had gotten to 750 subs. 29th October. That's almost a month back. And we have yeah, only gotten 20 subscribers since 20 then. subs. Yeah. So looks like it's going to be difficult, but it's like a last stretch. To be honest, Varun, if I look at how many people were watching Bro, us Mohit, today, I'll have to end the stream in 10 minutes so we can push up, I 10 guess. minutes नहीं, हम लोग अभी खत्म कर सकते हैं. That's okay. मैं ये बोल Okay. रहा हूँ खाली कि if you look at how much support we got today on our stream, if we do a stream every day, just show up and do a stream every day, I think we can get to 3,000 watch hours by the end of the year, and we can get to 1,000 subscribers. We can do that. यश तो पीछे ही पड़ा हुआ है. मैंने तो ये मैंने कभी नहीं बोला था, ये मोहित ने बोला था भाई डांस का. तो प्लीज स्टॉप पुशिंग इट. तुम तो लोग सर करो, शेयर स्ट्रीम, शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नहीं, सॉरी, शेयर योर फ्रेंड्स एंड प्रॉब्ली योर कजिन्स. गेट अस टू 100,000 सब्स. तो हम लोग का पता है क्या होगा कि यू नॉट ओनली द बेली डांस दैट यू वांट टू सी, यू विल सी all the OG panel together, probably in Bangalore, somewhere, and we will all be drinking, having a ball on a live stream in the जैसे वो देखते हैं ना वो, if you see kickoff, the club, when all those people or the overlap, वैसे we will be all on a single camera on together, having having that banter that we all enjoy about football and this channel. So you'll see it live, us doing that. We'll be shit drunk, I can guarantee you that, because I will not start the stream unless we all are at least 4 or 5 beers down. भगवान So बचाए that मैं will बस. be that will be what that's what I am looking forward to when we reach 2,000 subs. But anyway, all right, guys. I think we'll end the stream here. We took the last comment. Thank you guys for Yeah. joining, and we'll probably do something tomorrow as well. And if Yeah. not on this Tomorrow channel, I am gonna be on Banterverse tomorrow afternoon. Probably I'm gonna finish off my series. That's the car dealer simulator, because I've done all the objectives in that game, and I just एक चीज करनी बाकी थी, which we had promised. Okay, we will get to a $1 million का bank account with a full lot of cars. For that great shot के end में कि we are a millionaire. We started from nothing. So yeah. start from the bottom. I'm here. Yeah, absolutely. All ठीक है, right, guys. चलो. Thank you so much. See Thank you you for guys. watching. Thank you. Yeah, bye Bye bye. bye.